الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दौड़कर चलो उस राह पर जो तुम्हारे रब की बख्शिश और उस जन्नत की तरफ जाती है जिसकी वुसअत ज़मीन और आसमानों जैसी है और वो उन खुदा तुर्स लोगों के लिए मुहैया की गई है जो हर हाल में अपने माल खर्च करते हैं, ख्वाह बदहाल हो या खुशहाल हो, जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं। ऐसे नेक लोगों को अल्लाह बहुत पसंद करता है। और जिनका हाल ये है कि अगर कभी कोई फहश काम उनसे सरजद हो जाता है या किसी गुनाह का इर्तिकाब करके वो अपने ऊपर जुल्म कर बैठते हैं तो मान अल्लाह उन्हें याद आ जाता है और उससे वो अपने कसूरों की माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह के सिवा और कौन है जो उनके गुनाहों को माफ़ कर सकता है। और वो दीदा व दानिस्ता अपने किए पर इसरार नहीं करते। ऐसे लोगों की जज़ा उनके रब के पास ये है कि वो उनको माफ़ कर देगा और ऐसे बागों में उन्हें दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वहाँ वो हमेशा रहेंगे। क्या ही अच्छा बदला है नेक अमल करने वालों के लिए। तुमसे पहले बहुत से दौर गुजर चुके हैं, ज़मीन में चल फिर कर देख लो
कि उन लोगों का क्या अंजाम हुआ जिन्होंने अल्लाह के अहकाम को, अल्लाह की हिदायत को झुटलाया। ये लोगों के लिए एक साफ और सरीह तंबीह है, और जो अल्लाह से डरते हो उनके लिए हिदायत और नसीहत है। दिल शिकस्ता ना हो, गम न करो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। जज़ाकल्लाहु खैर। Jazakallah, Brother Faisal. Now I would like to call Janab Tausif Aslam Khan Sahab to come and accommodate the stage. He is currently the CAC member for Jamaat-e-Islami Hind. Also S. Ameenul Hasan Sahab to come and accommodate the seat on the stage. He is currently Vice President of Jamaat-e-Islami Hind. Our next speaker for inaugural words is City Secretary for Jamaat-e-Islami Hind, Chief Organizer for City Convention. He is currently serving as a delivery manager in IT firm and also NLP and life coach. Brother Tajamul Khan Sahab, please come and deliver your speech. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु अंतुमुल मुमिनून वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मुअज़्ज़िज़ शुरका, IT प्रोफेशनल्स की इस मीट में मैं आप सब का जमात-ए-इस्लामी हिंद शहर पूना की तरफ से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आई वेलकम यू ऑल। और मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारे बुलाने पर आप इस IT प्रोफेशनल मीट में शामिल हुए। मेरे नज़दीक दो चीज़ें वाज़ेह करनी है इस इंट्रोडक्टरी स्पीच के दौरान। मैं आपके सामने बताऊंगा कि ये सिटी कन्वेंशन, जो 2 रोज़ा सिटी कन्वेंशन, 2 डेज़ सिटी कन्वेंशन हमने ऑर्गेनाइज़ किया है जमात इस्लामी हिंद शहर पूना की तरफ से, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और जमात इस्लामी हिंद ने इसको किस लिए ऑर्गेनाइज़ किया है, और ख़ास तौर से ये जो सेशन है IT प्रोफेशनल मीट का जो सेशन है, ये सेशन के स्पेसिफाइड गोल्स क्या हैं, ये मैं आपके सामने वाज़े करता चलूँगा। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, हम देखते हैं कि आज हिंदुस्तान में, हमारे अज़ीज़ मुल्क में कुछ अनस्टेबिलिटी का माहौल है। कहीं फियर का माहौल है, कहीं मायूसी का माहौल है, डिप्रेशन का माहौल है। ये एक बबल है जो क्रिएट किया जा रहा है। इसकी तफसीलात में मैं नहीं जाना चाहूँगा, आप तमाम लोग इससे वाकिफ़ हैं। आए दिन आप लोग न्यूज़ चैनल्स में, टीवी पर ये चीज़ें देखते रहते हैं। कहीं ना कहीं हमने ये महसूस किया कि हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, इंटेलेक्चुअल हजरात हैं, वो कुछ एक खौफ का शिकार होते जा रहे हैं, बल्कि पूरी उम्मत भी खौफ का शिकार होती जा रही है। इसीलिए हमने सोचा कि एक ऐसा सिटी कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया जाए जिसका सेंट्रल थीम हो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। इस सेंट्रल थीम के तहत हमने ये सिटी कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया है।
इसके ज़रिए हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे अंदर जो मोमिनाना सिफ़ात, जो कैरेक्टरिस्टिक्स कुरान चाहता है, इस्लाम की रूह से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर आनी चाहिए, अगर उसको हम पैदा करते जाएं, अगर उस कैरेक्टरिस्टिक्स पर हम ध्यान देते जाएं, तो ये जितना भी बबल क्रिएट किया जा रहा है वो एक पिन मारने से ही फूट जाएगा। तो इसका सबसे पहला मकसद ये है कि उम्मत में, जो हमारी मिल्लत है, उसमें एक कॉन्फिडेंस पैदा हो, हम अपना काम किए जाएं, हम इस चीज़ को जो हमें डाइवर्ट करने जा रही है इसकी फ़िक्र ना करें, बल्कि हम अपना काम करते जाएं। दूसरा मकसद, जो दूसरा ऑब्जेक्टिव इस सिटी कन्वेंशन को ऑर्गेनाइज करने का है, वो ये है कि हमने देखा कि शहर पूना में, पूना सिटी में अलग अलग लोग अलग अलग जगह से आते हैं। मैं ख़ुद यहाँ पूना शहर का बासिंदा नहीं हूँ, मैं महाराष्ट्र के एक शहर नांदेड़ से यहाँ पर माइग्रेट कर आया हूँ और पिछले 20 साल से यहाँ रह रहा हूँ। आप में से भी कुछ लोग, कई लोग ऐसे होंगे जो अपने अपने इलाक़ों से, अपने अपने गांव, अपने अपने शहर से माइग्रेट होकर यहाँ आए होंगे। ये एक इंटेलेक्चुअल तबक़ा है, एक इंटेलेक्चुअल लोग हैं, एक ज़हीन तबक़ा है जो इस शहर में हमारे पास मौजूद है। उसमें आईटी प्रोफेशनल्स आते हैं, जैसा कि आप लोग हैं, बिजनेसमैन आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, टीचर्स आते हैं। हमने ये महसूस किया कि शहर की जो लाइफ है वो बहुत बिजी होती है। आप में से बहुत से लोग यहाँ पर हिंजेवाड़ी में आईटी कंपनी में काम करते होंगे, कुछ लोग कैंप में रहते होंगे, कुछ कोंडवा में रहते होंगे। कोविड के पहले अगर हम देखें, ऑफिस का जब टाइम था, ऑफिस हम लोग जाते थे तो हमारे 12 घंटे से ज़ायद सिर्फ हमारी ड्यूटी करने में सर्फ होते थे। लेकिन इस वजह से हमारा जो सोशल ग्रुप जो हमारे सोसाइटी में होना चाहिए, जहाँ हम रहते हैं, हमारे आस पड़ोस में होना चाहिए, उससे हम ज़्यादा वाक़फ़ियत नहीं रखते। हमें मालूम नहीं रहता कि हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है, हमारे नेबर में कौन है। लेकिन अगर मैं जॉब करने के लिए हिंजेवाड़ी जाता हूँ तो वहाँ मुझे पता होता है कि औंध में एक मेरा दोस्त है जो मेरे प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। मैं उसके बारे में हर चीज़ जानता हूँ, मैं उसके बारे में उसकी लाइफ के बारे में सब चीज़ें पता है। हम आपस में एक दूसरे के प्रोग्राम्स में भी जाते हैं। तो इस तरह से हमने ये महसूस किया कि ये जो इंटेलेक्चुअल तबक़ा है, इसको अगर जोड़ना है तो हम प्रोफेशन की बेसिस पर पहले जोड़ें, ताकि ये प्रोफेशंस की बेसिस पर जुड़कर एक ऐसा फोर्स बने, एक ऐसी ताकत बने जो इस मुल्क, सबसे पहले इस मुल्क और मिल्लत के लिए एक पॉजिटिव एसेट साबित हो, एक पॉजिटिव एसेट साबित हो, जिससे वो सोसाइटी में जाकर काम करे, अपनी सलाहियत, अपने स्किल्स को सोसाइटी को दे और एक ऐसा माशरा वजूद में लाए जो इन गुब्बारों से जो क्रिएट किए जा रहा है वो उससे कभी ना डरे। तो दूसरा मकसद ये है कि एक पॉजिटिव टास्क फोर्स हमें तैयार करनी है जो अपनी सलाहियतों को यहाँ इस्तेमाल करे और मुल्क और मिल्लत की तरक्की में अपना काम करे। मोहतरम हजरात, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 2 रोज़ा सिटी कन्वेंशन ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, ये जमात इस्लामी हिंद शहर पूना की जानिब से ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। जमात इस्लामी हिंद हिंदुस्तान में, इस मुल्क में एक बहुत ही मारूफ दीनी ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 75 साल से इस मुल्क में अपने काम अंजाम दे रही है। जमात इस्लामी हिंद का मकसद क्या है? हम एक ऐसा इंसान पैदा करना चाहते हैं जिसके लाइफ में, उसके लाइफ के हर शोबे में
इस्लाम नज़र आए, दीन नज़र आए। वो घर में रहे पेरेंट की हैसियत से तो उसमें भी दीन नज़र आए, वो ऑफिस में रहे एक प्रोफेशनल की हैसियत से तो उसमें भी दीन नज़र आए, वो तिजारत करे तो उसकी पर्सनालिटी से दीन झलके, और वो बिज़नेस में भी जाए तो भी वो उस तरह से एक्ट करे जिस तरह से एक मोमिन को एक्ट करना चाहिए। तो हम ऐसा फ़र्द तामीर करना चाहते हैं जिसके अंदर दीन मुकम्मल तौर पर क़ायम हो, और इसके लिए हम फ़र्द पर्सनल कॉन्टैक्ट से हर एक की तरबियत कर कर, हर एक को ट्रेनिंग देकर इनको तैयार करते हैं। 75 सालों में जमात इस्लामी हिंद ने बहुत से क्रिएटिव काम किए हैं। मुसलमानों में कुरान के पैगाम को आम करना, मुसलमानों को कुरान की तरफ जोड़ना, कुरान के सही पैगाम से अवाम को जोड़ना, ये मेरे नज़दीक बहुत नुमाया काम है जो हमने किया है। इसी तरह से कई मरहलों से हमारा ये मुल्क इन 75 सालों में गुज़रा है। हर मरहले पर जमात इस्लामी हिंद ने उम्मत की रहनुमाई की है, उन्हें एक सही डायरेक्शन दिया है। जमात इस्लामी हिंद शहर पूना जमात इस्लामी हिंद का ही एक पार्ट है। इस शहर में हमारी अलग अलग ब्रांचेस है, जमातें हैं। कोंडवा एरिया में, कैंप एरिया में, पिंपरी एरिया में और अकोडी एरिया में। यहाँ हम बहुत ही ग्राउंड लेवल पर, बेसिक लेवल पर हम काम करते हैं ताकि ऐसे अफराद तैयार हो जिनकी ज़िंदगी में दीन क़ायम हो जाए। और एक बात मैं आपके सामने ये भी अर्ज़ करता चलूँ, जमात इस्लामी हिंद शहर पूना ने इस तरह के कई और कॉन्फ्रेंसेस पहले पास में ऑर्गेनाइज़ किए हैं और कई सारे प्रोजेक्ट्स सोशल सर्विस के तहत, खिदमत खल्क के तहत ऑर्गेनाइज़ किए हैं। हमारा सबसे यूनिक प्रोजेक्ट जो इस शहर में शुरू होने जा रहा है वो है इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर। ये एक ऐसी मस्जिद हम तामीर करने जा रहे हैं, बल्कि कुछ हद तक ये तामीर भी हो चुकी है, जो मस्जिद नबवी के मॉडल के तौर पर हो, जहाँ मस्जिद में नमाज के साथ साथ अफराद की तरबियत हो, हमारे माशरे के मसाइल वहाँ पर डिस्कस किए जाए, सोशल इश्यूज़ वहाँ पर डिस्कस किए जाए, एजुकेशनल काउंसिल हो, करियर गाइडेंस के सेंटर्स हो, फैमिली काउंसिल के सेंटर हो। ये हमारा मरकज़, ये हमारा सेंटर पारगे नगर में क़ायम हो चुका है। कुछ चीज़ें अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन मस्जिद, करियर गाइडेंस सेंटर और आईटी प्रोफेशनल्स का एक फोरम आईटी हब के नाम से वहाँ पर मौजूद है। अब आखिर में मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज की ये जो मीटिंग हमने ऑर्गेनाइज़ की है, आईटी प्रोफेशनल्स मीट, ये मीटिंग आईटी प्रोफेशनल्स का एक तरह से एक नेटवर्किंग का ज़रिया हम करना चाहते हैं। मैंने आपसे कहा कि हम हमारे प्रोफेशन से ज़्यादा जुड़े होते हैं और हमारी पहुंच हमारे प्रोफेशन में भी कंपनी तक ही महदूद रहती है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा फोरम हम बनाए, प्रोफेशनल सॉलिडेटरी फोरम के तहत, जिसमें शहर के तमाम आईटी प्रोफेशनल्स जुड़े, अपनी अपनी सलाहियतें, अपनी अपनी स्किल्स इसमें लगाएं, साथ ही साथ अपनी अपनी स्किल्स को बढ़ाएं। मैं ख़ुद एक आईटी कंपनी में काम करता हूं। मैं जानता हूं कि अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, टाइमली हम अपने आप को, अपनी स्किल्स को बढ़ाएंगे नहीं, तो हमारा सर्वाइवल, हमारी जॉब में मुश्किल हो जाता है। ये आप भी जानते हैं। तो इस फोरम के तहत हम ये भी चाहते हैं कि आप जैसे लोगों का कंट्रीब्यूशन मिले और आप जैसे लोगों की एक स्किल ओरिएंटेशन भी हो, स्किल्स के तौर पर आपका गाइडेंस भी किया जाए, आईटी में करियर गाइडेंस भी किया जाए, और समाज को एक पावरफुल फोर्स हमें इस फोरम के तहत मिले
जिस फोर्स के तहत हम इस सोसाइटी में एक नुमाया क्रिएटिव काम कर सके। हम प्रोफेशनल्स हैं, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हम जानते हैं हमारे पास डेटा एनालिसिस की सलाहियत है, हमारे पास प्रोग्रामिंग की सलाहियत है, हमारे पास ऑब्जर्वेशन की सलाहियत है। तो इन तमाम स्किल्स को जोड़कर हम एक ऐसा फोरम कायम करना चाहते हैं जिसमें लोग कनेक्टेड रहें, अपनी सलाहियतों को दें और अपनी स्किल्स को परवान चढ़ाएं और एक क़ुव्वत जमात इस्लामी के लिए भी बने ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो। मैं फिर एक बार आपका इस सेशन में इस्तकबाल करता हूँ। इस 2 रोज़ा कन्वेंशन की ये पहला सेशन हमने शुरू किया है। इसमें जो सबसे नुमाया प्रोग्राम है वो एक एग्ज़िबिशन लगाई गई है। सामने टेनिस कोर्ट में आप जाते हुए उस एग्ज़िबिशन को देख सकते हैं, जिसमें मुसलमानों की 14 सदियों की 14 सेंचुरीज़ की शानदार तारीख़ दिखाई गई है और मुसलमानों का अब तक का सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है साइंस की फील्ड में और दिगर फील्ड में। इसी तरह से जमात इस्लामी हिंद अपने 75 साल मुकम्मिल कर रही है, तो उन 75 सालों में जमात इस्लामी हिंद के कंट्रीब्यूशन क्या रहे हैं। और साथ ही एक यूनिक डोम हमने बनाया है यहाँ पर, जिसमें एक 3D वीडियो प्ले किया जाएगा जो सोलर सिस्टम आपको दिखाएगा और कुरान की आयतें पेश करेंगे उसमें और उसका मतलब भी उसमें समझाया जाएगा। आप उसको ज़रूर विज़िट करते जाएं। इसके बाद आज ही इस मीटिंग के बाद एक बिज़नेस समिट ऑर्गेनाइज़ की गई है, जिसमें हमने तमाम बिजनेसमैन प्रोफेशनल्स को जोड़ने की कोशिश की है। आप में से भी जो बिज़नेस में इंटरेस्ट रखते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट रखते हैं, वो लंच के बाद वो सेशन अरेंज किया गया है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर शाम में एक अजीम शान खिताब आम एक पब्लिक मीटिंग रखी गई है, जिसमें हमारे मेहमान मुकर्रिर जनाब तौक़ीर रज़ा साहब और हमारे वाइस प्रेसिडेंट जनाब अमीनुल हसन साहब खिताब करेंगे। इसका भी सेंट्रल थीम वही है, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। कल का दिन हमारे पैरेलल सेशंस रहेंगे, जिसमें सबसे पहले एक और यूनिक एक्टिविटी है चिल्ड्रंस फेस्टिवल। 29 तारीख को हमने IIC में, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, जो कि कोंडवा पारगी नगर में वाक़ है, एक चिल्ड्रंस कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें 7 साल से 12 साल की उम्र तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। खिरात कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, लेटर टू गॉड और इस तरह से काफ़ी सारे कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किए। उसका कन्वोकेशन डे रहेगा और छोटे छोटे बच्चे अपने स्किट्स प्ले करेंगे, अपनी खिरात का मुजाहरा करेंगे। तो आप भी इस सेशन में आ सकते हैं। ये कल सुबह 10 से 1 बजे तक रहेगा। इसी के साथ साथ हमारे जो गाइड है इस उम्मत में, हमारे उलमा कराम, उनका एक सेशन रखा गया है। फिर दोपहर में डॉक्टर्स और टीचर्स का पैरेलल सेशन रखा गया है और इसी तरह से शाम में लॉयर्स एंड सोशल एक्टिविस्ट का सेशन रखा गया है। और आखिर में आप में से जो लोग अदबी ज़ौक़ रखते हैं, शेर व शायरी का शौक़ रखते हैं, उनके लिए एक मुशायरा भी रखा गया है। तो मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि इन प्रोग्राम्स में आप शिरकत करते रहें और इससे फ़ायदा उठाएं और साथ ही दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस 2 रोज़ा सिटी कन्वेंशन को कामयाब बनाए, इसके मक़ासिद को कामयाब बनाए। जज़ाकुल्लाह खैर। Jazakallah brother Tajamul. Now I would like to call Azhar Ali Warsi sir on stage. He is currently city president Jamaat Islam in Pune. Also Razil Islam Nadwi Sahab to come and accommodate the seat on the stage. He is Markazi secretary Jamaat Islam Hind.
Jazakallah. As you all know, Islam is about peace, love, humanity, giving and wanting for others what you want for yourself. Our next speech is on service to humanity by Janab Tawfiq Aslam Khan Sahab. He is currently CSA member Jamaat-e-Islami Hind, former National President SI of India, and former State President for Jamaat-e-Islami Hind Maharashtra. Janab Tawfiq Aslam Khan Sahab. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के इस इजलास के सदर मोहतरम जनाब एस अमीनुल हसन साहब, वाइस प्रेसिडेंट जमात इस्लामी हिंद, मरकज़ से आए हुए इस्लामी माशरा के सेक्रेटरी मौलाना रज़ीउल इस्लाम नदवी साहब, इस शहर के नाज़िम और प्रेसिडेंट जनाब अज़हर अली वारसी साहब, मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अलग अलग सेशंस जो रखे गए हैं, तो ये सेशन सिर्फ़ उन लोगों के लिए ख़ास किया गया है जो आईटी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि पूना एक हब है और इसमें इसका बड़ा काम होता है। तो उनको जो है तवज्जो दिलाई जाए, उनको इकट्ठा किया जाए ताकि मिलजुल कर उनकी नेटवर्किंग भी हो सके और वो इंसानियत के लिए कोई एक बड़ा काम भी अंजाम दे सके। मुझसे कहा गया है कि मैं ये बताऊं कि हम कैसा सर्विस दे सकते हैं कम्युनिटी को, और यहाँ कम्युनिटी से मुराद पूरी इंसानियत है, पूरा इंसानी समाज है, क्योंकि ये बात बहुत वाज़ेह होनी चाहिए हमारे जहन में। जब हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो पैदाइश बताई है आदम अलैहिस्सलाम के खलीफा के हैसियत से, और उसको जो काम करना है यहाँ नेकियों को कायम करना है, बुराइयों को मिटाना है, सारे इंसानों की मदद करना है। जितने भी दुनिया में इंसान हैं सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हमारे भाई बहन हैं। तो ये बड़ा हमारा तस्वुर है कि हम सब का खुदा एक ही खुदा है, हम सब के माँ बाप एक ही माँ बाप हैं, और अंजाम ये है कि हमको इसका हिसाब देना है। हम छूट नहीं सकते कि हमने अपने भाई बहनों के लिए क्या काम किया है। कुरान ने साफ़ किया कि काम के लिए मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा है और मैं अब तुमसे जो है इसके सिलसिले में हिसाब लेने वाला हूँ, चाहे हम किसी सेक्टर में रहें दुनिया के अंदर। तो जैसे कि बताया गया कि जमात इस्लामी का काम जो है वह इकामत दीन है, यानी अल्लाह के अहकाम को ज़मीन में पूरी तरह हर शोबे और गोशे में कायम कर लेना चाहिए। तब कैसे किया जाएगा? तो जो जिस शोबे में है उसके अंदर महारत हासिल करेगा और वहाँ जितना हो सकता है वह अल्लाह के अहकाम को जारी व सारी करने की कोशिश करेगा। अब देखिए, कुरान मजीद ने गौर फिक्र की तालीम दी है। कुरान ने ये नहीं कहा है कि कुरान मजीद में अहादीस से मालूम होता है कि हिफ्ज़ वगैरह करना चाहिए, लेकिन कुरान मजीद ने जहाँ तक का ताल्लुक़ है उसने गौर फिक्र की जो है तालीम दी है। क्या तुम जानते नहीं हो? क्या तुम गौर फिक्र नहीं करते हो? क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते हो? तो कुरान मजीद एक गौर फिक्र करने की किताब है, सोचने की किताब है, और वो वाज़े करती है कि आपकी दुनिया की ज़िंदगी भी कितनी खूबसूरत और कितनी मज़े की हो सकती है, और इसके बाद जब आप यहाँ से चले जाएंगे तो वो मौत नहीं है बल्कि इंतकाल है। आप सिर्फ ट्रांसफ़र हो जाएंगे आखिरत के लिए, और वो हमेशा हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी कभी हमारी ख़त्म होने वाली नहीं है। अब हमको करना क्या क्या है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने अरअयतल्लज़ी जो सूरत है तो वो आपके सामने पढ़ के सुनाई, सूरह माऊन। उसके अंदर क्या बात कही गई है कि भाई दीन को कौन झुटलाता है, यानी बदले के दिन को अज्र मिलेगा कि नहीं। वो कहता है कि नहीं, आखिरत नहीं आने वाली है, नहीं मिलेगा। तो वो क्या करता है? अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, यतीम को धक्का मारता है। उसको मालूम होगा ये कमज़ोर हो गया तो उसको बिल्कुल चूस लेता है। एक मजदूर है, अब काम किया उसने दिन भर, लेकिन मालूम हुआ कि मांगने गया तो उसको डरा दिया, इतनी कहाँ से तेरी तनख्वाह हो गई, 100 कहाँ से हो गया, 50 पे चला ले। अब बेचारा बड़े से क्या मुकाबला करे, दब के रह जाता है। तो एक ईमान वाले की कैफियत ऐसी नहीं हो सकती, पसीना सूखने से पहले वो जो है अदा करे। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, और वो भूखे को खाने पे नहीं उभारता। तो देखिए आज दुनिया में कितने लोग भूख की वजह से मर रहे हैं।
तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन तक पहुँचाएँ, खाना पहुँचाएँ, और पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो शख्स मोमिन नहीं, वो शख्स मोमिन नहीं, वो शख्स मोमिन नहीं। कहा गया कि कौन? कहा जो खुद पेट भर के खाए और उसका पड़ोसी भूखा हो। लोगों ने कहा वो यहूदी और ईसाई हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुछ भी हो। तो अगर पूना में कोई भूखा रह रहा है तो हम मुसलमान कैसे हो सकते हैं? तो हम अपने तौर पे तो काम करेंगे, ठीक है, अफ्रीका में नहीं है, हम जो बहुत अलग से इलाके हैं हमारे भी खुद मुल्क के, वहाँ हम नहीं पहुँच रहे हैं, तो अपने शहर में तो हम ये नज़्म करेंगे कोई भूखा न रहे। ये मुसलमानों का जो है पहला काम बताया गया। फिर ये बताया गया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, तबाही है नमाज पढ़ने वालों के लिए। अब नमाज पढ़ने वालों के लिए क्यों तबाही है साहब? तो इसलिए है कि वो अपनी नमाज से गफलत बरतते हैं। क्या नमाज से गफलत बरतते हैं? तो ये भी ठीक है कि कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ते, खुदा की तरफ तवज्जो नहीं, मगर असल काम नमाज का ये है गरीब को खाना खिलाना, यतीम की इज्जत करना, सारे लोगों की हुकूक की हिफाजत करना, ये नमाज का था। अब उसने ये तो किया नहीं, बस फजर को आ रहा है, घर में जाके सो रहा है, खा रहा है, लेट रहा है, खैलुल्ला किया, फिर आ रहा है, फिर नमाज पढ़ रहा है, फिर जा रहा है। तो ऐसी नमाज से क्या होगा? ऐसी नमाज कोई तब्दीली ला सकेगी समाज में? क्या नमाज का सिर्फ ऐसा है कि बस आदमी आए और 5 वक्त नमाज पढ़ के चले जाए? उसका तकाजा है। अब ये देखिए मस्जिद में हमने ये कोशिश की कहीं कहीं थोड़ा सा कि भाई वहाँ हमने कहा कि जिसके घर में खाना नहीं हम पूरे महीने का राशन भर देंगे, बीमार हैं हम उनकी पूरी इलाज कर देंगे। जमात ने इसलिए के लिए कई डिपार्टमेंट बनाई, तो लाखों रुपए उसका इलाज है वो कर रहे हैं। किसी को खर्च की ज़रूरत पड़ रही है तो गैर सूदी खर्च दे रहे हैं, जिसके घर में लड़ाई चल रही है उसको काउंसिलिंग कर रहे हैं। तो अब मस्जिद में कोई भी आ रहा है तो उसको मालूम हो रहा है साहब मस्जिद में जाने के बाद मेरा मसला हल होता है, तो वो कहेगा कि साहब एक मस्जिद मेरे मोहल्ले में भी खोलो ना। अब क्या हो रहा है, हमारे पास अजान ज़ोर ज़ोर से हो रही है, उसकी वजह से लोगों को साउंड का भी प्रॉब्लम हो रहा है, और आने वाले नमाजी उतने ही आते हैं। लेकिन अगर ऐसे खैर के काम मसाजिद से हों पूरी तरीके से, तो लोग तो कहेंगे कि साहब ऐसा हमारे पास होना चाहिए। तो दीन यही कहता है, और बार बार कुरान मजीद इसकी तरफ तवज्जो दिलाता है। अब सूरह बलद में देखिए बहुत सारी चीज़ों को कि अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतें गिनाई कि मैंने तुम्हें 2 आँख नहीं दिए जिसे तुम देखते हो, और तुमको 2 होंठ नहीं दिए जो बात करने के भी काम में आते हैं, तुम्हारी खूबसूरती को भी बढ़ाते हैं, और फिर हमने तुमको 2 रास्ते बता दिए। तो क्या रास्ते थे वो? तो 2 रास्ते, कुछ लोग कहते हैं कि एक नेकी और बदी का रास्ता बताया, कुछ लोग बताते हैं कि खुदा के हुकूक और बंदे के हुकूक ये भी तुमको जो है बता दिए गए। ये भी 2 रास्ते हैं, हुकूक अल्लाह और हुकूक लिबाद, ये 2 चीज़ें भी उसके अंदर आ गई। अब उसके अंदर क्या कहा गया? उसके बाद उस सूरत में कहा गया फलख तहमल अक़बा, कि वो जो है ना ये घाटी पार नहीं कर सका। तो घाटी क्या है? वमा अदरा का मलक़बा, क्या है वो घाटी? फ़क्कु रक़बतिन, गर्दन छुड़ाना, यानी खामखा जेल में ठोंस दिया गया है लोगों को। वो हक काम कर रहे थे, सच्ची काम कर रहे थे, गरीब थे, आज जेलों में कितने लोग पड़े हुए हैं, ये भी गुलामी है। या बंधुआ मजदूर हैं जिसके लिए स्वामी अग्निवेश ने किया, कितने बच्चे ऐसे हैं, आज एक किताब छपी हुई है कि तुम पहले क्यों नहीं आए। आज भी कितने बच्चों को लोगों ने दबा के रख लिया है, अपने पास गुलाम कर दिया है, उन्होंने बाहर की दुनिया ही नहीं देख सके। हम इसको फिक्र नहीं करते हैं। हम इसके सिलसिले में ट्रांसजेंडर लोग हैं, उनका मसला है, हम देखकर उनको हंसते हैं कि कुरान ने कहा कि ऐसे लोगों को देख के हंसा जाए, नहीं, उनके लिए हमारे पास क्या मसले का हल है? तो ये है उसके अंदर कि उनकी गर्दन ही छुड़ाना, और उनको जो है ना कर्जदार को भी कहते हैं कि कर्जों में मुब्तला हैं लोग। अब हमने देखा कितनी लोग आत्महत्या कर रहे थे, लेकिन जब हमने ये गैर सूदी निज़ाम किया परभनी के अंदर, उसका सबसे अच्छा है, 17 जगह महाराष्ट्र में चल रहा है, परभनी में उन्होंने काम ये किया है 3% लोगों को ब्याज मुक्त कर दिया। फौजिया खान जो MP हैं उन्होंने कहा कि साहब मैं MP रह के भी इतना काम नहीं कर सक रही। अब कलेक्टर SP सब आके हमारे पास विजिट दे रहे हैं कि आपने इतना बड़ा काम कैसा करा। 3 लाख की आबादी में 9,000 लोगों को करने के नतीजे में सबको मालूम हो गया अब जमात इस्लामी आम होगी। अब सिर्फ ज़िले इज्तिमा के लिए एक आवाज़ दी गई तो तकरीबन कोई बताते हैं 8,000, कोई बताते हैं 10,000 लोग उसके अंदर शरीक हो गए, और सबको मालूम हो गया कि काम क्या हमको करना है। तो गर्दन छुड़ाने में ये है कि कितने लोग आत्महत्या कर रहे थे, हमने ये देखा। छोटी मामूली रकम 10,000, 25, 50,000 के लिए लोग अपनी जान दे रहे थे, लेकिन हम ये छुड़ा सकते हैं अगर हम इंटरेस्ट फ्री सोसाइटीज़ के तहत जो है काम भी कर सकते हैं। और इत्आमुन फी यौमिन ज़ी मसग़बा, और भूख के दिन किसी को खाना खिलाना। देखिए सबसे बड़ी बात है, लोग भूखे होते हैं, अच्छे खासे होते हैं, लेकिन पैसे नहीं है, खा नहीं सक रहे, तो ऐसे वक्त हमारे पास कोई ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो खाना खिला सकें हम। यतीमन ज़ा मक़रब,
जो यतीम है और गरीब भी है। कभी कभी ये होता है हमारी तवज्जो सब बाहर होते आती है तंजीम में इधर, और हम अपने रिश्तेदारों को ही भूल जाते हैं। तो हमारे रिश्तेदारों में भी कोई यतीम है, गरीब है, तो उसकी मदद करना। और मिस्कीन अंगदा मतरमा, या ऐसा मिस्कीन जो मिट्टी से लगा पड़ा है। देखिए कुछ फ़कीर रहते हैं ऐसे पड़ जाते हैं, मिट्टी में पड़े हुए रहते हैं, बाहर लगे भी, कोई इख्तियार नहीं है उनके पास, कोई नहीं है, तो ऐसे लोगों की मदद करना। तुम मकान मिनल्लदीन आमनु व तवासो बिस्सब्री व तवासो बिलमरहमा, कि वो जो है ना उनसे ये बात कही गई कि फिर ऐसे लोगों में तुम शामिल हो जो एक दूसरे को हक की नसीहत करते हो, याद दिलाते हो ये फरीज़ा, और एक दूसरे को रहम खाने वाले, रहम करने की अपील करते हो। देखिए इंसान के अंदर क्या है, अगर थोड़ी तवज्जो दिलाई जाना मुतवज्जो हो जाता है। अगर मेरा ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन ये कहा लोगों ने साहब इनके घर में 3 दिन से खाना नहीं है, तो मैं मुतवज्जो हो जाता हूँ, है ना। अभी तक कुछ नहीं था मेरा, लेकिन उसकी कैफियत सुनते ही मेरा दिल पानी पानी हो जाता, तैयार हो जाता हूँ। हालांकि मैं बहुत कंजूस था, बखील था, लेकिन जब ऐसी कैफियत की तरफ हम तवज्जो दिलाते हैं तो लोग हमारी तरफ जो है मुतवज्जो हो जाते हैं। एक बात तो ये मुझसे कहने के लिए जो है कहा गया था। दूसरी है कि अब हम एक प्रोफेशनल होते वक्त हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखिए कोई भी अगर हम काम करते हैं ना, परफेक्ट करना चाहिए, मालूमात होनी चाहिए। अब हुआ ये कि मैं मस्जिद में गया एक बार, अच्छे साहब हैं, कारी हैं, बहुत अच्छा कुरान पढ़ाते हैं, तजवीद इतनी अच्छी है पूछो मत। उन्होंने कहा कि साहब देखिए कैसी कमालात हैं अल्लाह की दुनिया में। अब देखिए बोले सूरज है ना वो पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है, और अल्लाह का कारनामा देखो, बोले चांद पश्चिम से निकल के पूरब में डूबता है ना। तो हमको लोगों को मतवज्जो करना पड़ता है कि ऐसा होता है कि दोनों भी पूरब से ही निकलते हैं, है ना, मगर लोगों को नहीं मालूम। तो देखिए जो हमारे उलमाए कराम हैं उनसे भी हमको डिस्कशंस करना है इस सिलसिले में। हाँ, वो रहनुमाई कैसे करेंगे। अब एक साहब ने कहा उनको क्या मालूम है, तो वज़ू के मसाइल मालूम होते हैं, तलाक कैसे देना है ना, और कुछ दीनी मसाइल मालूम है। लेकिन अब हमने कहा कि हम गैर सूदी सोसाइटी चला रहे, उनको बड़ा पैसे कहाँ से लाते फिर आप, तो ये नहीं मालूम कि बैंक चलती कैसा, लोग लाते देते, किसी को देना नहीं पड़ता वहाँ। लेकिन चूंकि वाकिफ नहीं है, तो जब वाकिफ नहीं होगा तो मैंने भी खुद कहा उनसे, हम आपकी रहनुमाई कैसे कबूल करने, बताइए, आपको मालूम होना चाहिए ना। तो जो आदमी जिस फील्ड में उसका भी परफेक्शन होना चाहिए और दीन की बात भी उसको मालूम होनी चाहिए। तो जो आईटी में है उनको उसके बारे में और ज़्यादा सोचना चाहिए। अब मेडिकल के बारे में बताता हूँ, मैं लातूर में अभी भी हमारे पास ऑपरेशन कैसा कर रहे हैं, पूरा पेट चीर के कर रहे हैं। अब एक साहब का आया, हमारे दोस्त है, उन्होंने कहा कि हम तो आपका पूरा पेट चीरेंगे, 50% गारंटी है बचने की। अरे मैंने कहा ऐसा, हैदराबाद लेके चले गया, पूरा कुछ नहीं, अब थोड़ा सा सुराख किया जाता है और उससे जो है पूरा ऑपरेशन हो जा रहा है आपका। अगर आप ऐसा अप टू डेट नहीं होंगे तो कैसे होंगे। पाजा सुराख इस जिंदगी में भी मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात कही, एक आलिम बनने के बाद इसके अंदर वो कैफियत पैदा होती है कि वो दीन की बात को समझे, उस पर इत्तेफा न करे, बल्कि वो रोज़ाना मुताला करे, नए नए तफासिर का, कुरान का, गौर फिक्र का। ऐसी डॉक्टर बनता है, आईटी बनता है, हमारा नॉलेज बढ़ते रहना चाहिए, ख़त्म नहीं होना चाहिए। इतना नहीं कि नहीं साहब अच्छी तनख्वाह मिल रही है, अब क्या फ़ायदा है हमको इसके अंदर करने के सिलसिले में। दूसरी बात यह कि आजकल सोशल मीडिया के अंदर जो जितना फ़ायदा हम पहुंचा सकते हैं, अब देखिए इतने ऐप्स आ गए, उसकी वजह से अरबी सीख सक रहे हैं, उसके वजह से कुरान सीख सक रहे हैं। मैंने खुद इससे अरबी सीखी, मोबाइल से ही सीखी पूरी अरबी। अभी भी जो है कुरान याद करना, हिफ्ज़ करना, इतने अच्छे अच्छे तरीके उसके अंदर दिए गए हैं। ऐसे अब बच्चों के लिए जो कार्टून्स वगैरह आते हैं, हम ऐसे कार्टून इतने अच्छे इस्लामी बनाए, उससे इस्लाम की बच्चों की तरबियत हो, तामीर हो, और हम एक कम्युनिटी बनाएं पूरी आईटी की, चाहे मुस्लिम हो गैर मुस्लिम, यहाँ अखलाक कैसे परवान चढ़ सकते हैं, ये हमारा काम है, हम जिस मैदान में रहते हैं। मौलाना मौदूदी अलैहि रहमत से भी लोगों ने पूछा कि भाई जमात इस्लामी में पहले जो अरकान थे ना, तो वो नौकरी छोड़कर आ गए थे, जज थे तो वहाँ से छोड़कर आ गए, बिजनेस थे वहाँ से छोड़कर आए, और आजकल के लोग देख रहे हैं कि उल्टा दुनिया में ज़्यादा हैं जमात इस्लामी के लोग। मौलाना ने कहा हम इसीलिए तो जमात बनाए, पहले जमात नहीं थी इसलिए हमने उनको छोड़ने लगाया, लेकिन जब आ गए तब खेती वाला जो है वो खेती में इकामत दीन करे। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कैसा, ये जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं इसको हम कैसा बचा सकते हैं, वो अपनी फील्ड में। आईटी वाले क्या करेंगे, अपने इसको कंट्रोल करेंगे। एक बहुत अच्छा मौका है कि आप इसको इसके सिलसिले में जो है कंट्रोल करें। अब इसके बाद ये है, बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है आईटी के लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन देखिए रूहानियत के बगैर ये कामयाब नहीं हो सकता। आपका अगर ताल्लुक बिल्लाह नहीं है तो आप नहीं कर सकते। आप ये तो समझ सकते हैं कि साहब ऐसा करने के बाद हम ऐप बना सकते हैं, ऐसा करने के बाद उसके अंदर वायरस डाल सकते हैं, या वायरस को बचाने के लिए क्या तरकीब हो सकती है, ये तो हम कर सकते हैं। लेकिन खुदा के साथ जब आपके साथ ताल्लुक़ पैदा होता है, उसका नूर आपके दिल में उतरता है, जब उस वक़्त कैफियत अलग होती है।
अल्लाह कहता है जब मेरा बंदा इस तरीके से काम करने लगता है तो मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो काम करता है, मैं उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है ना। वो मेरी तरफ दौड़ के आता, चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़। तो खुदा से ताल्लुक़ के बगैर नहीं हो सकता। और असल ये है, हम ये सारी दुनिया में क्या करना चाहते हैं, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ना चाहते हैं। हमारी दिल की एक टिकटिकी तो ये है जो धड़ धड़ करा दिल, एक रूहानी दिल में हमारा धड़कता रहना चाहिए। हम गौर फिक्र करें, कुरान पे गौर फिक्र करें, अहादीस पे गौर फिक्र करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हम बार बार देखने की कोशिश करें। इससे अंदर हमारे अंदर एक बुलंद आती, हमको समझ में आता है सारी इंसानियत का काम करना है, सिर्फ अपनी कौम का नहीं करना है, सिर्फ अपनी फैमिली का नहीं करना है कि मुझे अच्छा पैकेज मिल गया तो अब मैं इधर इंग्लैंड घुमा के ला रहा हूँ और फलां कर रहा हूँ, मेरे कपड़े, मेरे कार, ये सब पसंदीदा है। इसमें से कोई चीज़ पसंदीदा नहीं है। इस्लाम ये चाहता है कि दुनिया में सबसे अच्छे आप रहे, मुसलमानों को इज्जत रहे। ऐसा नहीं है कि दुनिया काफिरों के लिए है और मुसलमानों के लिए जो है वो नहीं है। कुरान मजीद में सूरे आराफ में जो है कहा गया है, ये 32वें आयत में, कि खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, कि जब तुम मस्जिद को भी जाओ ना, सच संवर के जाओ, अच्छे बन के जाओ। ऐसे नहीं कि फटे हाल हैं और बाल इधर उधर जा रहे हैं। पहले ऐसा समझते थे कि इबादत यानी वो अच्छा टिप टॉप सूट बूट में है तो इबादत कैसी हो गई फिर वो। तो अल्लाह ने कहा कि नहीं, जैसे तुम मिनिस्टर से मिलने के लिए जाते हो, बादशाह से मिलने के लिए जाते हो, तो मस्जिद में जाओ तो इस तरीके से जाओ। कुलू व शरबू वला तुसरिफू, तुम खाओ पियो, इसराफ मत करो। आपको पसंद आ रहा है, हलाल की चीज़ आपके पास है, आप तुर्की से मंगा के खाना चाह रहे हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं दे सकता। आप हलाल की चीज़ होनी चाहिए, अच्छे कपड़े पहनो, लेकिन इसराफ नहीं। होटल में गए, आधा खा लिया आधा छोड़ दिया, तो ये बात, इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह तबारक व तआला ने इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। उसके बाद कहा, कुल मन हर्रमा ज़ीनत अल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादिही, कि अल्लाह तबारक ताला खुद पूछता है कि किसने हराम किया मेरी इस जीनत को जो मैंने बंदों के लिए निकाला था। इतने अच्छे बेहतरीन सीप में मैंने मोती बनाए, अब आपका मोती का इस्तेमाल ही छोड़ दो, तो क्यों बनाया था अल्लाह तबारक ताला ने वो मोती। तो ये काम जो है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बनाई गई। मार्बल आए हैं, अब मार्बल से हम घर नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे। खुद ही लिल्लदीना फिल हयाती दुनिया, कहा गया कि दुनिया की ज़िंदगी में भी ये मोमिनों के लिए है, खालिसतन यौमल क़ियामा। कि ये आता है कि फिर काफिरों को क्यों मिल रहा है, काफिरों को ये क्यों मिल रहा है, तो ये बताया गया कि इसलिए मिल रहा है कि अल्लाह के पास उसकी मक्खी के पर के बराबर भी नहीं है, तो तुमको जो है इस सिलसिले में ये कोशिशें करनी चाहिए। एक मिनट। तो इसमें जो है ना साहबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने मिलती हैं। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये तो तारीख़ आएगी तो आप ये तो मालूम ही कि कैसे कैसे साहबा ने लोगों की मदद की और इंसानों के वो करीब पहुँचे। पहले वो सादिक बने, अमीन बने, लोगों के पास गए तो लोगों ने फिर आपसे पूछा कि दीन क्या है। अब भारत में भी जो कोकन के इलाके में दीन आया तो इसीलिए आया, पहले इंसान इंसानियत देखता है, फिर कहता है आप इतने अच्छे इंसान क्यों बने, तो वो कहता है कि मैं खुदा को पहचानता हूँ, मैं रसूल को मानता हूँ, तो वो भी आपकी तरफ जो है आने की कोशिश करता है। एक आखिरी बात इसमें यह है कि कोई भी काम हमको इज्तिमाइयत के बगैर हम पूरा नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक ताला ने कहा कि आसमान और ज़मीन पे अगर अपने अंदर भी तुम गौर करके देखोगे तो तुम्हारे अंदर एक इज्तिमाइयत है। अब देखिए चांद सितारे अभी हम देख कर आए हैं, नुमाइश में भी आपके लगाया है, एग्जीबिशन में, ज़रूर देखिए कैसा हर ऑर्बिट में फिर रहा है, एक एक मदार में दुनिया फिर रही है, चांद फिर रहा है, सूरज, ये सब एक नज़्म के अंदर है। ज़र्रा भी फ़र्क नहीं है उसके अंदर, मिलीमीटर का भी फ़र्क नहीं पड़ता, बरसों तक नहीं पड़ता, वैसे कि वैसे सब काम कर रहे हैं और कितने बड़े बड़े हैं। तो ये पूरा नज़्म बना हुआ है, सूरज अपने वक्त पे निकल रहा है, चांद अपने वक्त पे निकल रहा है। अब देखिए दुनिया में जो कौमें हैं ना वो टाइम पे काम करने के बाद आती हैं। अब इंग्लैंड अमेरिका में जाइए, कोई प्रोग्राम है 9 बजे, बोले तो कितने बजे शुरू होगा, 9 बजे शुरू होगा। उनकी ट्रेन जाएगी 9 तो 9 बजे जाएगी। हमारा हाल क्या है, सब समझ गए, यहाँ तक कि हमारी नमाज हमको 5 वक्त बताती है। 1 बजे जमात बोले तो इमाम खड़े रह जाता है, हमसे ज़्यादा कोई टाइम का पाबंदी सिखाता है। रोज़ा बराबर 6:17 पे खोलना है तो खोल रहे, मगर पूरे प्रोग्रामों में उसके बाद देर। आप कैसे आप इसलाह करेंगे। तो ये दीन आ रहा है कि हमारे अंदर, तो जो दीन को अपना लिए चाहे वो गैर मुस्लिम है तो वो कामयाब रहेंगे। तो ये इज्तिमाइयत है, इज्तिमाइयत के साथ टाइम की पाबंदी है। तो सूरज अपना काम कर रहा है, चांद अपना काम कर रहा है, वो छोड़ रहा नहीं है। तो हर एक अगर अपना बराबर काम करता रहेगा, जुड़ के रहेगा, अलग हो गया वो दायरे से, समझो एक ऑर्बिट से निकल गया कोई, तो क्या होगा, सबको उसका भी नुकसान है, दूसरों का। इसी तरह जिस्म है हमारा दिल है, हमारे कलेजा है और हमारे गुर्दे हैं, सब मिलके काम कर रहे हैं। जब हम ये बोल रहे हैं, अब मैं हाथ है, मैं बोलूँगा नहीं मेरे हाथ से तो सब चल रहा है,
आंख कहेगी नहीं मेरे वजह से मैं तो बंद कर लेती हूँ अपने आप को, तो नहीं होता। ऐसी जब तक हम ये एक एक फील्ड के लोग एक जगह नहीं आएंगे, उसकी पॉलिसी प्रोग्राम नहीं बनाएंगे। देखिए मंसूबाबंदी का ज़बरदस्त कुरान में है कि ये पूरी दुनिया मंसूबे के साथ बनाई गई है, इंसान को मंसूबे के साथ रखा गया है। तो हम अगर वो जो करेंगे, बढ़ा रहे हैं वो तो 1 मिनट और ज़्यादा दे रहे हैं बोल रहे, तो ये जो है हमको ये इज्तिमाइयत के अंदर काम करना है। फिर ये है कि मर्द और ख़वातीन के अंदर भी हमने क्या समझा कि नहीं ख़वातीन को ये काम नहीं करना है, बल्कि इस्लाम ने दोनों को बराबर दी है। खाली विरासत में है वो कि औरत को एक हिस्सा मिलेगा तो मर्द को 2 हिस्से मिलेंगे, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। वैसे अगर आप पूरा करेंगे ना उसका विरासत की तकसीम, तो औरतों के हुकूक ज़्यादा निकलते हैं उसके अंदर। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने बैलेंस भी दिया है, लेकिन घर का निज़ाम चलाने की जिम्मेदारी जैसे मर्द को दिया है। अब हम ख़वातीन को कभी कभी सिखाते हैं, देखिए ये भी होता है, ख़वातीन को कहते हैं आप सब ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, और घर में जाने के बाद शौहर ये JIH से आ जाती है, ये SIO से आ जाता है। अब ये कहती कि मेरे को तो पूरी इख्तियार, SIO वाला बोलता है नहीं तुम घर में रहो ना, मैं सब कमा के ला के देता हूँ। फिर दोनों के अंदर इख्तिलाफ पैदा होता है इस्लाम में रहने के बाद भी। तो ये देखना पड़ता है कि इस्लाम कुरान क्या तरजीह दे रहा है, हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है। कुरान है, कुरान बताता है मर्द को कितने हुकूक रहेंगे, औरतों को कितने। हम सबमिट कर दिए अपने आप। तो इसके बाद जब हम ये इज्तिमाइयत के साथ लेकर चलेंगे तो आप देखेंगे घर में काउंसलिंग भी होगी। अच्छा हम बाहर बहुत अच्छा करते हैं लेकिन हमारी बीवी से हमारा टकराव होता है, तो ऐसा नहीं, हमारे घर में भी सुकून होना चाहिए, है ना, दोनों में मोहब्बत भी होनी चाहिए, बच्चों को भी प्यार मिलना चाहिए। तो एक ऐसी सोसाइटी, ऐसा नहीं कि हम प्रोफेशनल हो गए। तो मैंने देखा प्रोफेशनल लोगों का ऐसा पूरा वक्त उधर जा रहा है, घर में वक्त ही नहीं मिलते, घर में वक्त नहीं देते, तो ये भी बड़ा इम्बैलेंस। तो हम ये चाहते हैं इसके ज़रिए जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में बैलेंस पैदा हो, उनकी ज़िंदगी में खुशी आए, वो दुनिया में भी भरपूर कामयाबी और गालिब रहें, और आखिरत में खुदा के पास जाएँ तो वहाँ भी सुरखरू हों। तो ये चंद बातें मेरे जहन में थी, मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। Jazakallah, Janab Tawsif Aslam Khan Sahab. Now for the next session on panel discussion, I would like to call Nawed Khan on stage. Also, I would like to request the dignitaries to please occupy the front row seats. जज़ाकुल्लाह खैर जिब्रान भाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। That was not loud enough. Now that's the spirit. We are IT professionals and I think थोड़ा सा विगर हमने दिखाना चाहिए. Do you agree? Yes. Or are we all satisfied with our jobs? I think not. There are multiple crises we go through, and the intention of this panel is primarily to address some of the problems and try to address it through some of the solutions. Now, what better way to do it than call some industry experienced professionals and have a discussion on that. So the whole agenda, basically, my brothers and sisters, is kind of to make you all aware what are the challenges in IT and how those challenges can be overcome as a moment. So I want to underline that fact, as a moment. If you look at the theme, तुम्हें गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो, I would just like to add a small thing in that. तुम्हें गालिब रहोगे कैसे in IT अगर तुम मोमिन हो. So we'll have to check that out. और ये पैनल डिस्कशन उसी तहत हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि इस आइडिया को हम थोड़ा आगे ले जाए, हम थोड़ा ये समझ पाए कि बीइंग इन IT, how we can give our best as a woman. Okay? Couple of things I just would like to reiterate. Please, आपके मोबाइल्स अगर साइलेंट ना हो तो आप प्लीज साइलेंट पे जाइए. Let's respect the decorum. Let's respect the forum, and then we can move forward. Now, the topic for the discussion today is challenges in the IT sphere and the best way forward as a Muslim. So it's a very general and broad topic,
but we have a very experienced panel, by the way. So the expectation is not only to seek information from this panel, hear their views, but towards the end of the session, we will throw it open for a question and answer session as well. So very humble request, we are IT professionals, let's make the session interactive. खामोश नहीं रहना है. Towards the end, when the session is open for the Q&A, please, मेरी आपसे गुजारिश है, I would like to request you all to ask as many questions as possible, preferably with respect to the topic in hand. Okay? Now, without much ado, what I would like to do is, I would like to invite the panelists out here one by one. So the first one, I would like to invite Brother Hasib Lunje. Hasib bhai, if you can come on the stage, please. So Brother Hasib is a lead DevOps consultant with Principal Financial Group, and he has completed his master's from Indira Gandhi College of Engineering and B Computer Science. Having said that, Brother Hasib is predominantly and very actively involved on counseling and guidance of not only students, but of IT professionals who are experienced as well. So I take a lot of pleasure in inviting Brother Hasib. Jazakallah. Next, I would like to invite Sister Hina Bargir Saudagar on the stage, please. Sister Hina is an engineering manager at HP Hewlett Packard. She's done a double graduation in mathematics and computer science and is an MCA from Mumbai. She's having around 18 years of experience in the IT industry, and her aim is to contribute and guide the community in the field of education and in software industry. So, Sister Hina, Jazakallah Khair, if you could come on the stage, please. Next, I would take the pleasure of inviting Brother Hamad Azam, please. Hamad Bhai is an MBA from ICFI, currently working with Dell Technology as a software quality advisor, having 15 plus years of experience at various corporate levels. Having said that, Brother Hamad is a founding member of PSF. How many of you all know what PSF is? Just a guess? Very few. So I would not like to elaborate on PSF because Brother Hamad is going to get the stage later on to explain what is PSF. So I will leave it up to him, but he is doing very pioneering work on this front as well. Brother Mozam Daimi, if I could invite you, please, sir. Brother Mozam is a general manager with Vodafone Cloud Connectivity and Engineering Department. He has completed his MTech from Jawaharlal Nehru Institute, Business Management from IIM Bangalore, Senior Executive Leadership Program from the Harvard Business School. So I'm honored to invite Brother Mozam on stage. Thank you. Jazakallah khair. Last but not the least, if I could invite Brother Mozam Daliat, Director of ProSoft eSolutions. He is a very seasoned veteran of software design and development with over 20 years of experience. He specializes in research and evaluating software technologies and products. So thank you, Brother Mohsin. We've got a panel which is very experienced. We have a panel who can share and contribute their knowledge on the IT field. Okay, certain rules and regulations before I jump and deep dive into the panel discussion, please. So each panelist will be given an opportunity to present his or her view on the question presented to them. And post the panel discussion, like I said at the start, we will open for a Q&A session where I would request you, and I would humbly request you to take this opportunity to actually pose your questions to the esteemed panel as well. All right. So I would like to kickstart the panel discussion. Now my first question would be for Brother Hasib. So Brother Hasib, the first question what we would like to ask you, and we would like to hear your views on the same, is how can an individual plan on a better footing his or her entry into the IT world? So I would like to repeat the question. कोई अगर इंडिविजुअल है और उसे आईटी वर्ल्ड में दाखिल होना है तो किस तरह से वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है और क्या बेस्ट अप्रोच होगा? तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है, बट इसके अंदर बहुत सारी डीप इंसाइट
ब्रदर हसीब दे सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ही डज अ लॉट ऑफ काउंसलिंग एंड गाइडेंस. सो ब्रदर हसीब, अगर आप इसके ऊपर थोड़े से तवज्जो दे सकते हैं प्लीज. I think it is a very nice question for the, as you told, it is for the interns, the people who are coming into IT. I will give a small story. Okay, it was the career counseling season going on, and I went with my daughter to a bakery. She was getting attracted towards the cake which is having the toppings on that one. Okay, so at that point of time, one term coined in my brain, and that is the career topping. तो हमारे जो freshers जो निकलते हैं, so those are like plain cake, plain vanilla cake, okay, but everybody likes the cake with the topping, okay. So what I feel कि जब हम IT में जब इंटर हो रहे हैं, organizations are also looking for certain toppings on that plain career, okay. So what is the first topping? तो जनरली मैंने देखा है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी सारा टेक्निकल के ऊपर जो है जोर देते रहते हैं. What I feel is instead of technical they should first concentrate on aptitude and reasoning. Aptitude and reasoning, क्योंकि जितनी भी बड़े छोटे IT कंपनीज हैं, they are checking the freshers with the aptitude and reasoning. Okay, so the first layer on our degree is the aptitude and reasoning, then it is the soft skills, then it is the truth and the honesty, because मेरे पास काफ़ी सारे लोग आते रहते हैं and they ask कि हमें कुछ fake experience मिलता है क्या. So what I request, avoid that fake experience and be honest. टेल कि आपको 1 साल से आप जॉब सर्च कर रहे हो एंड ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन यू हैव डन these things. Okay, so being as the interviewer, being as the counselor, I have seen that people are trying to lie. So please don't lie. The interview panel, the organization knows, yes, the freshers will not get the job immediately. Then the last thing is adding certain basic things. Okay, जैसे कि C++ है, Java है, Python है. So ऐसे basics को आपको improve करना है. So this is for the freshers who are coming for the in the industry, and this topping goes on increasing for the experienced people as well. What does it mean is, as our experience grows, so we need to have different toppings on our career. Hope this answered the question. Absolutely. Jazakallah khair, Hasib bhai, very well put forward. I really like your point about the toppings. So जैसे आपका करियर बढ़ता है वैसे आपकी टॉपिंग्स बढ़नी चाहिए और इम्प्रूव होनी चाहिए. माशाल्लाह. Thanks a lot. My next question is to Sister Hina, please. It's a very prudent question. Basically, a lot of sisters have gathered here, and the question is related to how the current IT environment, especially from a female perspective, with regards to safety, career growth, and opportunity. How is the career IT? How is the current IT environment for sisters? Assalamu alaikum. Okay, I have been in this industry for last 18 years now, and I have seen the whole changes that is happening in the IT world. Career opportunity, I would say very positively, it's equal. I would say it is more for women because we all know we need to maintain a diversity candidate. It is a rule in the IT industry that the number of females has to be on the percentage what the company decides, and we get more opportunity. On a very lighter note, one of my colleagues said कि हिना if ऐसे hiring होगा तो one day हम diversity हो जाएंगे. It is like that. So women has a special ground. मैं हायरिंग के लिए जाती हूँ. लास्ट ईयर मैं PCCOE गई थी. मेरे को एजेंडा दिया था कि मिनिमम 5 गर्ल्स होनी है इन द क्राउड ऑफ 16 हायरिंग. मैं मिला नहीं मुझे. आई एम टॉकिंग फ्रॉम जस्ट जेंडर पर्सपेक्टिव. मुझे फीमेल्स मिले नहीं हु कुड क्रैक द एप्टीट्यूड टेस्ट, द लॉजिकल टेस्ट, कम्युनिकेशन. इंग्लिश कम्युनिकेशन वॉज नॉट गुड, एंड डेफिनेटली बेसिक्स जो भाई ने कहा अभी, बेसिक जावा का प्रोग्राम नहीं लिख पाए या पाइथन का बेसिक प्रोग्राम नहीं लिख पाए.
सो फीमेल्स के लिए आई वुड से दिस इज़ मोर गुड फील्ड. एडिंग टू सम मोर पॉइंट्स, पैकेज बहुत अच्छा है, हम सब जानते हैं पैकेज बहुत अच्छा है. इंफ्रास्ट्रक्चर पॉश ऑफिस में जाके हम लोगों को बैठना पड़ता है, कोई क्लाइंट इंट्रोडक्शन नहीं होता है. मैं जाती हूँ ऑफिस, अपने क्यूबिकल में बैठती हूँ, अपना पूरी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म करती हूँ, घर आ जाती हूँ. किसी के साथ इंट्रैक्शन नहीं होता है, मेरा सारा इंट्रैक्शन थ्रू मेल्स चैट्स होते हैं. अभी तो वर्क फ्रॉम होम में मैं एक ही दिन ऑफिस जा रही हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कंपनी और उस पर मेरे टीम ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी है कि हिना आप दूर रहते हो, आप एक ही दिन आ जाओ. माशाल्लाह 2 साल काफ़ी अच्छे से मैनेज हुआ है. एक दिन आओगे तो टीम को मोटिवेशन होगा. दैट इज़ व्हाट द सेकंड इज़. 5 डेज़ वर्किंग है हमारा, 5 दिन काम करती हूँ मैं, जम के काम करती हूँ. 2 दिन पूरी हाउसवाइफ रहती हूँ, पूरे घर के काम करती हूँ. उस दिन मुझे मेरा रोल नहीं याद आता. मैं उस दिन एक घर पे मम्मा हूँ, एक वाइफ हूँ, एक बेटी हूँ, एक बहन हूँ. उस दिन मैं अपना 100% करती हूँ, बाकी के 5 दिन मैं 100% एज एन IT प्रोफेशन करती हूँ. सो सेफ्टी एंड ऑल है, इट इज़ हाउ यू इंटरप्रेट, इट इज़ हाउ यू एब्जॉर्ब. बहुत सेफ है. मेरी डॉटर अल्हम्दुलिल्लाह इज़ 16 years old. शी हैज़ completed her class 10. नाउ शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग. मुझे भी यही क्वेश्चन आया था, व्हाट नेक्स्ट फॉर माई डॉटर. आई फेल्ट मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सेफली गई हूँ, हो जाएगा मेरी डॉटर का भी. बट मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला मेरे फैमिली से, मेरे इन-लॉ से, मेरे मॉम से, मेरे घर वालों से, मेरे हस्बैंड, सब से. एवरी वन इज़ सपोर्टिंग मी. वो 5 days दे नो इट, हिना इज़ बिज़ी है, ठीक है, बट नेक्स्ट डे मैं कवर अप करने की कोशिश करती हूँ. तो वही है, अगर सपोर्ट है, सब कुछ है, तो IT इज़ बेस्ट फील्ड फॉर फीमेल्स. बहुत सेफ है. इसको आप आपके मेंटेन कर सकते हो. पेशेंस चाहिए, दैट्स इट. उसको इंटरप्रेट कैसे करते हो वो देखो, वरना ये फील्ड बहुत अच्छा है फीमेल्स के लिए. मुझे किसी से, गैर लोगों से ज़्यादा इंट्रैक्शन करना ही नहीं पड़ता है. ओवर मेल सब हो जाता है मेरा. Thank you, Sister Hina. Well put forth your views. Now I'd like to move over to Brother Mohsin, please. Brother Mohsin, can you share what is the current IT trend with respect to entrepreneurship? You yourself are an entrepreneur, so I think it's wise for us to pose this question to you. So if you could throw some light on what is the current IT trend with respect to this entrepreneurship area. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. I was told that Hindi or English, any language can be opted. So I would prefer to choose Hindi. बेशक. माशाल्लाह काफ़ी पुणे जो सिटी है IT हब है, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि प्रोफेशंस जो हैं, प्रोफेशनल्स IT फील्ड से हैं. आप सब जानते हैं कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी, कई सारे जो है ट्रेंडिंग IT इसमें मार्केट में चल रहे हैं आजकल. लेकिन हमको ये देखना है कि इसमें एक्सपर्टीज़ हमारी एक्सपोजर कितना है, और हम वेल नॉन किस सेक्टर से आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात ले लेंगे, मशीन लर्निंग की बात ले लेंगे, तो नाउ इट हैज़ बिकम एसेंशियल टूल ऑफ द बिजनेसेस. AI और मशीन लर्निंग हर कोई चाहता है कि उसका काम जो है, उसकी एफिशिएंसी बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े. तो कहीं ना कहीं बिजनेसेस आर गोइंग टू गो विथ AI एंड मशीन लर्निंग. रोबोटिक्स की एक बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि ऑटोमेशन हर इंडस्ट्री चाहती है कि उसका प्रोसेस जो है वो ऑटोमेट हो, बिजनेसेस को ऑटोमेट किया जाए, ताकि सीमलेस वर्क हो. और दूसरा इसका एक और पहलू ये भी है कि वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो उसको बेटर तरीके से किया जाए. तो इसके चलते हुए कई सारे जो बिजनेसेस हैं ये ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं. तो रोबोटिक्स आजकल ये काफ़ी हेल्पफुल है मार्केट में. और इसके ऊपर अगर हम ज़्यादा
अच्छी तरीके से काम करते हैं, एक्सपर्टीज़ अपनी बढ़ाते हैं, इसको नॉलेज गेन करते हैं, एक्सपोजर रखते हैं, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा ट्रेंड है। साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि मैं इस फील्ड से बिलोंग करता हूँ, तरह के जो है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को ऑप्ट करने की कोशिश की जाती है, तो इसमें ये भी एक अच्छा ट्रेंड है कि हम इसके ऊपर काम किया जाए। ये केवल प्राइवेट बिजनेसेस एज वेल एज द गवर्नमेंट सेक्टर, इसके लिए भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। IoT की भी हम बात कर सकते हैं। जब से इंटरनेट ऑफ थिंग्स की शुरुआत हुई है, फ्रॉम लास्ट 1 decade वी आर हम देख रहे हैं, इसके ऊपर काम भी करते हैं। आई नो कि आप भी प्रोफेशन इस फील्ड से होंगे, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा बिजनेस है। और 2030 तक एक स्टडी ये बताती है कि 50 बिलियन डिवाइसेस वुड बी कनेक्टेड टू इंटरनेट। सो एक काफ़ी अच्छा फील्ड है इसमें हमको देखने के लिए। तो इस तरह के कई सारे और भी हमारे मार्केट ट्रेंड हो सकते हैं, और एक काफ़ी कंडूसिव है। अगर हम थोड़ा आई नो प्रोफेशंस बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत अच्छे स्किल्स हैं, लेकिन जॉब के पर्सपेक्टिव से टेक्नोलॉजीज़ को न देखें, बल्कि एक एंटरप्रेन्योर के इससे देखना चाहिए। हमारे पैनल में भी है, ऑडियंस में भी आई एम श्योर के मैनेजरल पोस्ट से बहुत सारे ये हैं, लेकिन उनको चाहिए कि जब टीम मैनेज कर सकते हैं, लोगों को मैनेज कर सकते हैं, तो आई एम श्योर दे विल मैनेज कंपनी एज वेल। सो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा सा आगे बढ़ें और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आप ज़रा ध्यान दें। शुक्रिया ब्रदर मोहसिन, और आपने आपकी पॉइंट्स बहुत अच्छी तरीके से रखी, जज़ाकल्लाह खैर। आई वुड लाइक टू टेक अ स्मॉल पॉज हियर and the forum would like to welcome Mr. Ashok Kadam, Senior PI from the Lashkar Police Station. We are thankful to him. He has cooperated in organizing this event. So Mr. Kadam, thanks a lot. Appreciate your presence here, sir. Thank you. I will move forward with the discussion. I would like to move over to Mozam Bhai. And Mozam Bhai has a wealth of experience. You've already heard in which areas he's working. I'd like to put a very simple question to you, sir. How can we scale up our IT abilities? So I know we have a lot of professionals out here sitting. I myself, I've got around 23 years of experience in IT. At a stage, I was at a crossroad. Kya karu ya kya na karu? Right? I'm not talking about the song. I'm talking about what should I do and what should I not do. So Brother Mozam, if you could just throw your light on how do we scale our IT abilities when you're kind of at a crossroad in your career, and what could be the best IT fields? I don't think we can pinpoint to some simple fields, but आपका इसके ऊपर क्या राय रहेगी, sir? So how can we scale up? That's a question in every IT professional's mind, right? But before we start scaling up, we have to build our base as well. The cake example, I think, was phenomenal here, and he was talking about the toppings on the cake. But the cake has to be good as well, right? If you are asking for a chocolate cake, it has to be a good chocolate cake. And what I mean by that, we need to have strong holding on the areas which we are working, or on the areas on which we want to work on. Unless and until we get our basics right, we cannot start discussing how can we progress further. Absolutely. Be a subject matter expert first in your own area, and then start adding all the stars and colors into it. Now there could be like multiple ways, and I'll tell a general way, but let's see one thing. What are the things which you see can help you immediately? That should be the question in your mind always. At the same time, we have to be Doordarshi as well. We should be looking forward. Where do I want to be after 5 years? This is a very cliched question which is asked normally in interviews. Where do you see after 5 years? It sounded stupid to me as well when I was getting into the industry. But then I realized if we have a right target in front of us, then these things help. Setting a right goal helps in building the skills. Now, I've seen in IT industry especially, the graduation is enough. You need not have the master's. You need not have a PhD or an MBA. But these things set you apart. There is this common misconception
that unless and until you pay me, I won't study further, right? Like us parents paid us for our school and college. Now we want our manager or companies to pay for our certifications and further education. No. What I urge normally whenever somebody comes to me for guidance, that keep a certain percentage of your income in grooming yourself in technology direction, in communication skills, in the management skills, and go out, socialize, mingle into the networks, and that's when you will know where exactly we have to go. So the answer cannot be put in a single point that, okay, this is what we have to do, but it's a process and which takes time. The short-term target and the long-term targets. Short-term targets cover all the certifications which you might have in database, in networking, in security, in programming, you name it. And the long-term thing would be, where do I want to be after a certain time? And it might need your attention to get into further education. And I also want to add one more small point into it. Find a good mentor, right? When you get into the industry, it so happens that we feel siloed. We are so busy, or we get some sort of assumption that, no one cares about me, I should come, do my job, go back to home. It doesn't work like that. True. So there is this common trend in industry. Either you go up or you go out, right? For going up, you have to build your skills, you have to build your relations, and you have to show the consistent performance in the areas which you are working on. Or move laterally, go somewhere else, but then it cannot carry forward continuously. So it has a three-pronged target which you can approach, and it is applicable for people who are getting into the industry as well. Build your basis first and then go for further things. Thank you. Perfect. I am sure you all must have agreed to all these views presented by Brother Azam, SME, target approach, and mentorship. But what resonated with me the most was, keep a little bit of your pay aside for keeping yourself upgraded. It's not that आप 30 साल का experience हो गया है, 20 साल का हो गया है, तो I know everything. No, this is a learning process. It has to be continued throughout your IT life journey, right? So very well put forth, Brother Azam, I appreciate it. Last but not the least, I would move over to Brother Hamad. Brother Hamad, if you could share a little bit background about PSF and some of the challenges you have faced and how they have been overcome. I know you have a separate forum for this as well, but if you could just briefly throw some light and enlighten us, please. So regarding the challenges faced by PSF or a professionals forum, I would say, for any organization for that matter, when it starts with very basics. It starts with an idea, and that's how it started. And challenges for sure, as different people from different background, different work culture comes into one room, they come with different ideas. And to help them accommodate and settle them under one single idea, that's make it more challenging. And I believe the whole and soul idea about PSF is all about being professional and working towards the network. So what we came to a conclusion altogether, and then we formed this particular organization was, it will be a networking group, and that's how every professional from different professions will come together and be a part of it and form a great network. Great. Thanks a lot, Brother Ahmad. I'm sure he must have faced a lot of challenges, but the smile on his face shows that he has gone through those challenges very well. Thank you. I would like to move over to Brother Hasib again. And sir, I've got two questions for you. Now, as a Mu'min, as a Muslim, what are the pitfalls which you see in the IT industry? I'm sure there could be some, right? And the other is offering salat during the office time, or even for that matter, breaking your fast. So what are the challenges you faced and how did you overcome them? If you could just give a small synopsis and how did you try to overcome those, please? Yeah, so about the first part, what I feel is issues are there around. And when we are sitting on the lunch table, when we are sitting on the tea table, what I always feel is that yes, burning issues are there. And we, as the individual, should always keep away ourselves from those issues. Okay. But we should have the right knowledge as well. We should have the right knowledge as well. We should always speak about the humanity. The professionals should also know the law of the land. Okay.
because if we don't know, then it is very much difficult for us. Okay, so keeping away from ourselves the unwanted burning issues, we should not start those issues on the table. There are so many things which we can speak on the lunch table, on the tea table. Okay, we can give some jokes, we can get involved, some kind of share business and all those things. So that discussion should go on. But if something gets started, then I think we as a Muslim should also keep the right. Don't target the people. Target, yes. So this is the issues happen. What is right and what is wrong? Keep our instance very clear. Okay, be the human. Show the humanity for that one. Show the empathy, sympathy for that one. And again, abide to the rule of the land. Absolutely. Okay, so that is the first part. And the second part about Salah. I don't think in IT anybody has stopped me for praying or fasting. Okay, so if you ask me what are the hurdles, so it is the hurdles not from the front people. Okay, it is the hurdle in our brain. True. We are getting hesitant. We are getting hesitant to say that okay, मुझे नमाज के लिए जाना है, मुझे रोज़ा छोड़ना है. So I haven't get any opposition till now from any of the fellow mates. Alhamdulillah. Okay. Obviously, we need to be completing our work before that one. Okay. Nobody is stopping us to take break irrespective of how many hours, how many times. But the thing is that you complete your work, then do whatever you want. Correct. So what I feel is abiding to our work culture, completing our work, then you pray wherever you want. Okay, nobody is stopping, because I was working with multiple big companies. It was a big conference call, room. I used to pray, everybody around 25 people are sitting, छोटा सा मसल्ला है, छोटी सी white रुमाल है, मैंने उसको डाल दिया, वहाँ पे नमाज पढ़ ली. So nobody is stopping, they are supporting. They are supporting. And since you are not doing anything wrong, okay, so perform in a proper place and tell that, okay, so this is as a Muslim, you need to pray, you need to go for Jummah, you need to go for Zuhr, okay, you need to go for the इसके लिए मतलब आपको fast छोड़ना है. So they will provide you the support rather than if we don't speak, how they are going to support us. Okay, so I feel that okay, this is a very supportive industry. Okay, we just need to be clear and polite. Absolutely. Yes. Hope I answered the question. Absolutely, Brother Asif, I think well put forth, and I'm sure कि हमने भी काफ़ी सारी यहाँ पे देखा होगा कि we get a lot of support. We get a lot of support, and I think he's rightly put it. It's all in the mindset. It's in the mindset. We just need to have a proper approach for it. I want to add one point. Sure, sir. Sure, brother. Especially the iftar part, make it a feast. Invite them. They would love it. Yes. Right? In Vodafone, 3 years ago, I invited like 45 of them after Taraweeh to come to Kausar Bagh and have a feast with me. Yeah? Now, we are meeting after 3 years. I entered a hall of around 50 people, and they are asking, when is Ramzan? We want to come again. We are meeting after 3 years. Right? Same thing goes for namaz as well. I used to have a manager in Delhi, and he would make sure that every Jummah he gives his car key to me, and he would tell, and this is back in 2009, that he would say, it's Friday, go for your prayers. I never even asked for a permission for that. Now, this is, as brother said, I'm just adding 2 more these smaller points to it. Right? Make it visible and do your work perfectly, be a subject matter expert and all. And things will align for everyone. This has been happening with me for the last 18 years. I'm sure it will happen with you as well. Great, absolutely. And I think just if I may add a little point, don't please take undue advantage. आप जुमा के लिए जा रहे हो, you come back, read your farz, you read your sunnat nafil and come back to office. If you're taking a break for 2 hours, I think you're taking an undue advantage. I think we have to be conscious of that fact. All right, I'll move over to Sister Hina, and I'm clubbing 2 questions for you, sister. How can sisters in the IT industry tackle the hijab issue? Okay, that's something which all of us would like to know. What are your views and suggestions on that? And on a larger level, how to balance work, life, and deen? So what are your views on that, if you could share it, please? Okay. So, same, adding to what my
both the brothers said, कि following hijab and all is possible, is acceptable unless and until you are capable for your position, you are doing your work at the best, they will accept it very wholehearted. The day I started wearing hijab, they were saying कि कुछ बीमार हो, क्या हो गया अचानक and all. It's not like from childhood I am wearing my hijab 10 years back since I have started wearing hijab. But the day I went, it was like कुछ बीमार हो, कितने दिन, क्या हुआ, डॉक्टर ने कुछ कहा? नहीं. Alhamdulillah that I started on the first day of Ramadan. अच्छा रमज़ान के लिए पहन रही हो, ठीक है, and all that. So it happened. After 1 month also the same thing. तो हिना क्या हो गया? नहीं, I have started wearing. Why? क्यों? क्या हो गया and all that. So it is not. They didn't say कि they were concerned कि why Hina has started wearing or ये, or even I got one of my colleague who started. She joined wearing hijab and all. So they started कि okay, she is Muslim, she is following her path. But we both were valued because what job we were doing, what job profile we were hired on, that was matchable what to their expectation, and they were not getting any similar outside immediately at that pay scale. Let me add it to a complete statement. So they valued me, I kept upgraded myself, I made sure whatever a colleague of my level, my experience is doing, let me take those challenges, let me do my work, get myself certified, get myself upgraded. So this hijab and all didn't get registered to them. They were knowing Hina as this, okay, she is doing it, okay, Saira is doing this, finish. They were known me as my skill set, my position, not I am wearing a hijab or I am a Muslim. Now eventually they have started appreciating it. They say, Hina, it's good, your hair are saved from the pollution and all and all. During the lunch parties and all, I sometimes go, I don't go. If I'm going there, they know Hina will take veg. She will not go for non-veg because she has the doubt of being a halal food and all. They, Hina, should I also start veg? मुझे भी पता नहीं. This is good, your halal food. So even I'll take veg. So eventually they listen to you, they understand you, and they follow you. It is like we have to put it a very positively. Patience is very important. Initial कुछ लोगों ने बहुत हेट्रेट किया, ना दिस इज़ नॉट लुकिंग गुड, ये वो वगैरह. ओके फाइन, पेशेंस थी मैं, मेरे को उनके इसमें अच्छा दिखना भी नहीं था, जाने दो. बट बाद में दे लाइक इट, दे एक्सेप्टेड मी, ओके है ना, इज दिस वे तो ठीक है, एवरी मुस्लिम इज. बट टू द अदर साइड ऑफ अस, आई एम नॉट वेरी लर्नड. दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग टू our people, our brothers, our sisters, the right way of hijab and all. I did some R&D, I have been. I am not, I help all my learned sisters, brothers to guide me. Is the black only burqa is hijab? I have been into multiple companies, I have seen people on a great post wearing loose, long dresses, different colors, beautifully wearing their scarves and all, and managing it. So the other question is for us people, is it that black burqa is the only hijab, or the other way, the way I can hide my hair, hide my whole body, wear loose dresses and be presentable is fine. At least to gain the confidence and enter this world. Eventually, definitely we can do it, but let's enter with the other way, and can we do that? That would be a question for all the learned people here. Thanks a lot for giving those insights, Sister Hina. Now, in the interest of time, and I think we are running a little bit late, I would like to move over to the Q&A session, please. So, what I would like to do is start off with the first question. In the meanwhile, there are volunteers who are there within the audience to whom you can use the mic from them and pose your questions. But the first question which I would like to open for the panelists is, the IT culture, जो आपने देखा है, काफ़ी open है, comparatively. There is a lot of cross-gender interaction होता है इसमें, काफ़ी सारी parties होती है, और इस culture में, as a woman, how do you think हम हमारी individuality as a woman हम बरकरार रख सकें? So what are your views on that? That's an open question to the entire panelists. And of course, as I said, those who have other questions, please use the volunteers and pose your questions using a mic. Please, the panelists, if you all can throw some light on it.
Well, my view on this is be there. Be there for everything which is happening in office, right? It could be some preparation for, say, 15th August. It could be just a team meeting. Maybe somebody from onshore is coming and they want to have some R&R session. Be there and possibly show your skills as well. I would rather say be there to take that prize which they are giving in front of all. And even for outside setup, if it is not just drinking and dancing sort of stuff, if it is, say, lunch, dinner, or maybe going on outside somewhere, please make sure you go there. Sure. Right? I think that is the area, that is the place where we will be able to talk more about us as an individual and about Islam whenever a question pops up. Our presence matters a lot. In regular work, we won't get the chance to interact and talk much about it. So all my friends and colleagues and even seniors who know about me and a little bit about Islam through me, that has happened outside office setup, in outside office setup, not while sitting and doing our job. So I think that's an opportunity to utilize. That's my opinion. Others could have differences. Thank you. So, very interesting question. I would like to say, how do I take that particular instance? I see that as an opportunity. I see that as an opportunity because I see that Islam gives you the complete direction as to how we should be about the teachings about right and what is wrong. However, I see that as an opportunity because I see that while I get into all the activities of my office, I get that opportunity to present myself and say what I follow, right? So what is right, what are the right things that I follow, that I do not drink, I don't be a part of pub culture, and that is how, I mean, I will not be a part of the pub culture for sure, but at the same time, while the discussion is going on, while the planning is going on, I would definitely present myself in a way that this is what I believe in and this is what are my limits. So I see that these can be very small instances which can help you trigger that instance to have more and more discussions about it as to why you do not do this, and then you get the opportunity to present our teachings. Like, why do I do not drink? There are the entire story is there. I mean, so that's how. And completely agree with Sister Hina what she mentioned about. So it's all about the culture. So we should just try to adopt to that culture, but we should also put our stance as to what we believe in, and the corporate basically respects that. It is not that they just follow one single culture or one single attitude. So it's all about the corporate basically respects each and every culture. So we should be proud enough to be a part of it and also promote that. That's it. Thank you, Brother Rahman. Yeah, I will just add something that, okay, as brother told that, okay, yes, get involved. Okay, so we have been also there. So I don't think we are taking our spouses over there. Okay, what I feel is take your spouses, let them be in niqab there, let them be in hijab. Okay, because that is the point, that is the time when we have a point to carry to give our Islamic message. Because recently I took my two daughters in the office. Okay, so for the kids, the dance things are going on. And from that group, they came out and they told that, okay, we don't dance. So my manager and those leaders got astonished कि यार बच्चों को भी तुमने ये बता दिया क्या? Okay, so I think just push it. So our kids will also feel हाँ हमें ये नहीं करना है, हमें जाना है लेकिन ये नहीं करना है. Because our kids, our wives also should know that, okay, yes, this is what the open culture they are living in, and this is how those limits are. True. Okay, yes. True. Thanks a lot. I think two takeaways: define your limits, but take this as an opportunity to present yourself as true moments. Any questions, please? Hello. Assalamu alaikum. Actually, my question is regarding the job in the IT industry. Basically, now we are seeing after the lockdown, a lot of IT professionals who work to use in the IT industry.
and they had to leave their job either by their because of the lacking of the skill set, or either the company don't want to continue with them, and they lose their job. And some of my friends, they used to work in a teaching field, in engineering lecture field, so they are professors. But now the current scenario, they are not getting the pay or whatever the amount they used to get. And now they are getting 10,000, 15,000 salary kind of per month, being a mechanic, being a MTech or being a professor. So they used to come because they see we are working, and they used to come for the help to get the job and opportunity in the IT industry. But somehow they wanted to, because they started to skill up themselves, and they gave up because they are not, because they already spent a lot of time in the working in the other field. Now it's very hard for them to switch from one skills to another skill. And they want the job, they want to pay because they want to run their family. When they come to us, it is very hard for us to suggest them upskill, and they choose another approach to have fake experience. So how to deal with this? Maybe brother Mohsen and maybe Asif can answer on that. So how can we help those friends and those professionals? They want to job and they want to upskill. So, brother, if I, in the interest of time, if I could just concise your question. Yeah. I think भाई ये पूछ रहे कि किसी को अगर रीस्किल करना है और फिर से, for example, somebody working as a teacher wants to come in the IT field, what is the best way possible ensuring that the payment is also at par? I think that's the mafun, or that's the synopsis of the question basically. Anybody, if you can take it. Yeah, so there were multiple questions, whatever you told. So one thing is that, okay, people are not getting job and they are losing due to COVID and all those things. On my LinkedIn profile, I have written an article, Recession a Myth. What does it mean is, if we are aligned to the leading technologies, then recession will not touch. Okay, the calculator came, right? So the technology is getting advanced and advanced, but it has not reduced the job. It has created the job. Just take the example, if we take IT, okay, no doubt, testing jobs are getting reduced, but automation jobs are getting increased. So we need to know where the jobs are getting open. And the second part, what you ask is, okay, about the changing and all those things. What I feel is, we don't need to change our job, our profile drastically. It depends upon how much experience you have as well, okay? So yes, if you are 3 years, 4 years, yes, definitely you can change. But if you are from mechanical and coming with 15, 20 years of experience or 10 years of experience, so what I feel is, we need to find out the relative job in IT, relative job. And you believe me or not, Alhamdulillah, in my contact, there are so many mechanical engineers. Recently, one person from UK, Alhamdulillah, I helped them. So he got a job. So what does it mean is, we need to see what are my previous skills, and in IT, where are those aligned to? Where are those aligned to? Don't jump from AIML to big data, Hadoop and all those things for the senior people as well. We need to know what is my previous experience, then we need to add a proper wrapper. We need to add a proper wrapper on our experience, because wrapper is very much
एकदम नॉटियस्ट टीममेट से भी वो निकलवा लेते हैं प्रोजेक्ट. दैट इज़ हाउ द ट्रेनर्स आर. सो द IT फील्ड इज़ ये. एंड हिजाब का persistent and patience is important. You follow what you are. You keep your boundary. Things will automatically change. Things will come into your plate because you have that skill, you have that attitude, you have that patience, you are polite. लड़ना किससे है यार? वहाँ किसको हम अपना ये दिखाना? Act में let's show it that कि what is my core value of Islam? I'm patient, I'm silent, but I'm doing my job at my top priority. Anyone से compare कर लो, I'll try my best कि I'm not behind that. फिर हिजाब वगैरह वो लोग नहीं सोचते मैं कैसे भी कपड़े पहनूं, कैसे भी जाऊं. उनको क्या काम होता है? Excellent point put forth. But I think the message has gone through. But my sincere apologies. We are running very late for the next program, and Ameenul Hasan Saab is waiting. And we did have a lot of questions, but I would sincerely thank the panelists for their great views. They are still here. I would like you to take the opportunity to interact with them one-on-one, and please get a resolution for your queries. I again sincerely thank all the panelists for their time and for their valuable answers. Thanks a lot. Jazakallah khair. Just a last point from Brother Mozam. If you want to reach out to him on LinkedIn, please do. Jazakallah team. Now I would like to call Brother Hamad for PSF introduction and initiatives. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you are not sleeping. So let us start with some question and answer here, like an interaction. Do you believe in yourself? Okay, let's start it this way. On a count of three, 1, 2, 3. On a count of three, everyone will say PSF. Okay? So 1, 2, 3. PSF. Let's try it once again. On a count of three. 1, 2, 3. PSF. Great. Now, do you believe in yourself? Yes? So let's shout it out. Do you believe in yourself, guys? Okay. Do you believe that by working hard you will be successful? Do you believe that you have that courage, you have that one beautiful thing in you that can create an impact on the people surrounding you? Yes? If you believe in all these three things, I would like to say that you actually possess a growth mindset. And why do I say that? Because growth mindset doesn't come just by thinking. It has to be believed. Okay? And we are here to discuss about Professional Solidarity Forum, Pune. And the beautiful part today is I am addressing such an energetic and charged crowd here who has come from different parts of the city, from different parts of, and I think many of them are different parts of the, have come here and working here, have been migrated to Pune from different cities. And I see that
you all are working from, you all work in different companies, come from different cultures. So let me just quickly take time here to introduce you about what PSF is all about, Professional Solidarity Forum is all about. There's one motto that we are connected with, and that is connect. That means connect with each other, change, connect, serve, and then change. So connect with each other, bring that desired change in ourselves first, and then in the society. So that's how we are working on. Now quickly moving out to the strategy, and I would like to just quickly give you a brief about how did we start. So Professional Solidarity Forum started in Hyderabad in 2009, and we started with a very humble and modest beginning, as any other forum basically starts. And this particular forum started with just few like-minded people who wanted to do something in the society, and they just came along, and then we thought about what should be the what is the gap that we identify in the society, and okay, let's start with some social activity. So this forum also started as a basic social activity forum, and over a period of time, like almost like 3 years, 4 years, 5 years down the line, we only worked as a social service organization, and we did so much of social work in the city. We did medical camps, unlike any other NGO that does. However, while we were growing, while we were accommodating more and more people towards this particular goal, because the exact goal was not yet decided for the forum. So people used to come, people used to give ideas, and we used to accommodate and just do that social service kind of an activity. However, over a period of like 4 to 5 years, when people started realizing what should be our whole and soul motto towards this particular organization, and what is this forum, what this forum can actually do. Because one basic thing, if you identify in this particular forum is, and which becomes a valued strength of this organization, is we have 100% literate people here in this organization. That's what makes it a complete different from any other NGO in that I would say in our society. There could be a number of NGOs working here and there, and there will be a number of people. However, I would say we are the only people who are 100% literate, and we should definitely encash that. And that's what that basically triggered ourselves to start thinking about what this forum should be, what should be our bigger goal, what should be this particular forum of professionals or gathering of professionals should basically look forward for and look out for a bigger goal. So that's how we just defined our goals and objectives, and we comprised completely today I would say we comprise it under 5 different verticals. Now let me be very honest here, that for that matter, anything that you do in your life, what we believe in is we are a little selfish, right? I'm like, I will be selfish towards myself as to what's in it for me. So when I offer you about Professional Solidarity Forum or any other NGO, or if I invite you to join any other forum, you would say, what's in it for me? So I would like to give you an answer here. What's in it for you if you join PSF or if you become a part of PSF? The first thing that you get is, if you see, that is Personal Enablement Program. So this is one of the verticals that we have designed for our members' personal well-being and personal growth. So this completely focuses, the activities designed here are completely focusing towards the members' personal growth and personal well-being. And the second thing that we will look forward for is, while I am a working professional, I would also like to see what is it that I can do in my career. So career development, the professionals development program that we have, continuous professionals development program, the CPDP vertical that we have formed, basically gives you the connect or gives you the complete idea of upskilling yourself and running towards the professional growth. So these 2 things are for you. These 2 things are for an individual, and you get that answer as to what's in it for me. Like, you get professional growth, at the same time you get professional growth, right? Personal growth as well as professional growth at the same time.
And while we are connected with each other for while I say that we are 100% literate and we have so much of talent with us, now what should we do? Okay, we are upskilling ourselves personally as well as growing ourselves professionally. However, there should be some other motto as well. So the below three verticals that you see, the job and career guidance, the skills academy, and the social service. So these are the three verticals through which we try to give back to the society. Our complete target audience is professionals. So the job and career guidance, I would like to just share a few examples with you from Hyderabad, because this is a well-established forum in Hyderabad and in Mumbai and few other cities as well. And in Pune, we are, alhamdulillah, taking it as a great step to start today, and we will begin here from here on. So job and career guidance, through job and career guidance vertical, we try to guide people. There were many questions which were coming up as to what should I do, or what should be the career counseling part. So Professional Solidarity Forum being where we have experienced people, we try to impart that knowledge, or impart that, share the knowledge with others who are in need. So so that's how job and career guidance came into picture. We have multiple job groups through which we impart regular job updates and all, and we also do some job drives. Skills Academy is something that we have formed in Hyderabad, wherein we impart the contemporary knowledge about today's technical courses that people are looking out for. So, but the difference here is we come with a non-profit mindset, and that's the reason we give the same kind of knowledge from industry experts with no profit in mind. However, to help and give the students the right guidance and right trainings. And that is how, and social service is a part of us. We do not call ourselves as a social service organization, but social service is a part of us, and through social service we do various activities. Now, so this was all about that I was talking here, and I will just give you some pictures. So through the through the personal enablement program, we try to engage with each other. Through the Skills Academy, we give trainings. Through job and career guidance, we do placements. Through social service, we have proved and we serve the society, and the entire organization is known for its networking. So that's how we are in the market, and that's how we are strongly we have strongly made our presence in the market, and we are a registered NGO. So we have everything in place in terms of legalities and everything. So we try to give our best in terms of everything. So we call ourselves the growing network group, and we would, and through the job through the CPDP vertical, that is Continuous Professional Development Program vertical, we actually are trying to create leaders in the society. So ask from you, I'll just quickly wind it up as I just have 1 minute to conclude. So the ask from you is, while you are aware of all these things now, the ask from you is, you just, it's like we just need to be that 1%. I'm not expecting you to change yourself or get yourself completely into the organization, but what I say is, get that 1% in yourself, and we just want that 1% the world needs. So will you be able to get this and get going along with us? Yes, inshallah. So the ask again is, join PSF today. Here is a QR code, here are the contact details, here is the office address for PSF Pune, and our coordinators will be in touch with you. We'll get back to you with regards to what all are the activities that they have planned, inshallah. So here is a QR code that you can take a picture of and scan and be a part of us. So will you all promise to be a part of this forum from here on? Inshallah. Jazakallah khair. Jazakallah, Brother Ahmad. Important announcement. Namaz-e-Zohar will be performed at 1:30 by Jamaat at the masjid. Arrangements are made for the same. And after namaz, lunch will be served at the basketball court. Volunteers will guide you for that.
So our next session is on which we were eagerly waiting for. It's on being professional, productive Muslim. Our speaker is the master of all trade. He is Vice President Jamaat-e-Islami Hind, member Markazi Majlis Shura. He's completed BE in Civil, MSc Psychology. He's Managing Director, Expo Developers, Bangalore. He's NLP Life and Leadership Coach. Janab S. Ameenul sir, sahab, please come on stage. हेलो जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह लंच के वक्त भी एनर्जी बाकी है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला या जिबालु अव्विबी मअहु वत्तैर वअलन्ना लहुल हदीद अनिअमल साबिग़ातिन वक़द्दिर फ़िस्सर्दि वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलून बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के इस प्रोफेशनल मीट में शरीक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बड़ी खुशी की बात है कि आज प्रोफेशनल्स को यहाँ जमा किया गया है। प्रोफेशनल्स से क्या मुराद हम लेते हैं? वैसे तो डॉक्टर्स भी प्रोफेशनल्स माने जाएंगे, साइंटिस्ट भी प्रोफेशनल्स माने जाएंगे, लॉयर्स भी प्रोफेशनल्स माने जाएंगे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एंड फॉर द सेक ऑफ दिस प्रोग्राम वी हैव ए कन्फाइंड डेफिनेशन ऑफ हु प्रोफेशनल्स आर। यहाँ हम जब प्रोफेशनल्स बात करते हैं तो द पीपल हु आर वर्किंग इन आईटी इंडस्ट्री, दोज हु आर वर्किंग इन मैकेनाइजेशन एंड ऑटोमेशन सेक्टर्स, दोज हु आर वर्किंग इन एम्बेडेड टेक्नोलॉजी, इसी तरह से दोज हु आर इनटू मार्केटिंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग, पर्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू आईटी सेक्टर। ये और इस तरह के जितने लोग हैं उनको हम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी कॉल देम एज प्रोफेशनल्स। जबकि मैंने कहा कि और लोग भी प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, तो जिनकी क्वालिफिकेशन बीई, बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमबीए, तो उस तरह के लोग आज इस प्रोग्राम में शरीक हैं। हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि प्रोडक्टिव प्रोफेशनल्स। मुझे कहा गया कि इन द लाइट ऑफ कुरान आई नीड टू एक्सप्लेन यू नो हाउ ए मुस्लिम इज़ व्यूड इन कुरान as to who is a professional person and a productive person. This is our agenda for today. Why we need to be productive, we'll discuss about this in brief. Then we'll be taking up the subject about professionals, most productive person of history, mention of productive professionals in Quran. ये हम थोड़ा सा लेंथी बात करेंगे, and leading a productive life. ये आज का हमारा एजेंडा है गुफ्तगू का। I've given here a few questions. You may read those questions, and if you feel like that you are there inside that question, then we will proceed ahead. And if you feel that none of the question is about you, that means you have stopped to be productive. You have stopped to be productive. ये questions अगर आपके जहन में आते हैं, I am a student wondering what career is right for me, और ये question आपके जहन में आता है कि I am not happy with my current job, I want to make a change. या आप ये कहते हैं कि I am an entrepreneur looking for a way to earn more money and at the same time be able to spend more time with my family. अगर आपके जहन में ये सवाल है कि I am a C-level executive willing to position myself as a thought leader and a sought after expert in my field,
आपके जहन में अगर ये सवाल है कि आई एम ए तहरीकी पर्सन, आई एम ए पर्सन रिलेटेड विद सम ऑर्गेनाइजेशन, विद सम NGO हु इज वर्किंग फॉर द कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, बट आई एम नॉट लिविंग अप टू द एक्सपेक्टेशन, आई डू नॉट नो अबाउट माई टैलेंट्स, आई एम नॉट एबल टू बी ए गाइड एट होम, I cannot contribute a lot because procrastination takes toll on me. I'm a leader, I can lead. I need to play a leading role in my greater family. These are few questions जो लोगों के जहन में उभरते हैं. आप में से कोई फील करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जहन में आते हैं? If you feel that these are the questions or some of the questions which you too have inside you, that means you want to be productive, you want to grow, you want to have greater say in the society. So can you see the common theme in all these seemingly different solutions? सवाल ये है कि अगर आपको कॉमन पॉइंट अगर कहीं तलाश करते हैं इन तमाम में, तो द नीड टू स्टैंड आउट, ये अगर अर्ज है, ये अगर डिज़ायर है, ये अगर फीलिंग है कि आई नीड टू स्टैंड आउट, आई नीड टू ग्रो बिग, आई नीड टू ग्रो टॉलर, I want to be productive, I want to be a great professional, I want to be contributing to the society, I want to live a life for the cause of humanity. ये असल में इसका आंसर है अगर ये क्वेश्चंस आपके जहन में. So why we are discussing this subject today? Because we want to check whether really we are on the path of growth or we going down. About professionals, this is not कि मैंने अपने नुकात रखे हैं, बल्कि साइकोलॉजिस्ट दे हैव कलेक्टेड डाटा फ्रॉम प्रोफेशनल्स एंड दे हैव एनालाइज्ड इट, एंड बेस्ड ऑन दोज दीज आर द इंटरप्रिटेशंस, दीज आर सम ऑफ द important points. IT specialists are logical people, insightful thinkers, innovative, adaptable, and open to new ways of doing things. Is it right? ये मेरा नुक्ता नहीं है. साइकोलॉजिस्ट जिन लोगों ने आईटी इंडस्ट्री में काम करने वाले नौजवानों पर रिसर्च किया, डाटा जमा किया, तो उनका ये ख्याल है कि आईटी प्रोफेशनल्स आर लॉजिकल, थॉटफुल थिंकर्स. इज इट ट्रू? कितने लोगों के लिए ट्रू है? ठीक है, बहुत अच्छा. मेंटेन एन अनयूजुअल डिग्री ऑफ स्किल एंड डिस्क्रिशन इन कैरिंग आउट स्पेशलाइज्ड टेक्निकल प्रोसीजर्स. अभी बातचीत हो रही थी पैनल डिस्कशन में, केक की बात हो रही थी, तो केक की टॉपिंग के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है केक खुद भी अच्छा होना चाहिए. मार्केट में केक 10 रुपये का भी मिलता है, मार्केट में केक 100 रुपये का भी मिलता है ना. तो डिपेंड करता है, सर ने जैसे कहा कि सिर्फ टॉपिंग की नहीं बल्कि केक की क्वालिटी खुद अच्छी होनी चाहिए. तो आईटी प्रोफेशनल्स के बारे में ये है कि वो अनयूजुअली हाई लेवल ऑफ डिग्री एंड प्रोफेशनलिज्म अपने अंदर रखते हैं. और अभी एक बात डिस्कशन में ये आई कि आपने अगर बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, बाहर निकल गए, तो इससे आप बड़े प्रोफेशनल नहीं बनते. आपको सोसाइटी से एक्सपोजर, इश्यूज़ का एक्सपोजर, प्रॉब्लम्स आते हैं, आप हर्डल्स को फेस करते हैं, चैलेंजेस को फेस करते हैं, न्यू थिंग्स लर्न करते हैं, नए सर्टिफिकेशंस करते हैं आप, देन यू ग्रो बिगर. अगर ये आप नहीं करते तो जहाँ थे वहीं रहते हैं. मैं ऐसे प्रोफेशनल्स को जानता हूँ, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि बाद लोगों को हमने स्कॉलरशिप वगैरह देकर पढ़वाया. बाद में मुझे लगा कि स्कॉलरशिप देकर पढ़वाने में एक नुकसान भी होता है. वो है कि भाई MCA, MTech वगैरह कर लिया, लेकिन आज ये करते हैं कि बैक ऑफिस के लिए छोटे मोटे काम कर रहे हैं. तो उन्होंने ये कहा कि अनफॉर्चुनेटली जो प्रोग्राम डिज़ाइनिंग करने का सब्जेक्ट है उस पर हमने उस ज़माने में तवज्जो नहीं दी, तो आज हम पीछे रह गए. बस कंप्यूटर में बैठकर कुछ काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए बैक ऑफिस में, बैक एंड में काम करते हैं, मगर कोर सब्जेक्ट जो प्रोफेशनल का होता है, डिज़ाइनिंग और वो जो आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं, उसमें पीछे रह जाते हैं. तो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स के बारे में जो मार्केट में है, उनकी खूबी है. सोफिस्टिकेटेड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड माइक्रो प्रोसेसर्स, ये इस पर काम करते हैं. जो न्यू जनरेशन के कंप्यूटर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, उन सब पे इनका काम होता है. ये साइकोलॉजिस्ट ने ये लिखा है आपके बारे में. Remaining calm in a crisis does not necessarily come naturally to them. Is it true? Is it true or wrong? ताकि मुझे मालूम हो, मैं भी साइकोलॉजिस्ट हूँ, I'm interested in knowing this. He says that remaining calm in a crisis does not necessarily come to them. Automatically calm रहना उन्हें नहीं आता. सही है?
स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, बर्न आउट होने लगता है, दे लूज द बैलेंस वर्क और फैमिली के बैलेंस में, और ख़ुद काम का इतना प्रेशर, स्ट्रेस, दबाव होता है कि जिसके नतीजे में समटाइम्स दे गेट स्ट्रेस, दे हैव एंग्जाइटी प्रॉब्लम, दे हैव डिप्रेशन प्रॉब्लम। ये सारे इश्यूज भी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को होने लगते हैं। एंड पीपल ऑफ गुड नेटवर्किंग, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेटवर्किंग जो है ये सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स की खुसूसियत है, नॉट अबाउट द कंप्यूटर नेटवर्किंग, इट इज़ अबाउट सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग पर रिसर्च ये बताता है कि दो किस्म के टाइज होते हैं, सोशल टाइज। वन इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग सोशल टाइज, द अदर वन इज कॉल्ड एज वीक सोशल टाइज। स्ट्रॉन्ग सोशल टाइज से दुनिया में काम नहीं होता, दुनिया में काम नहीं होता। मैं आपको जानता, आप मुझे जानते हैं, बरसों से जानते हैं, तो हम लोग चाय पी सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं कर पाता, मेरा कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं करते। लॉट ऑफ रिसर्च हैज़ गॉन इनटू इट। मेरे पास हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च पेपर है, मेरे पास और बाद यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्च पेपर्स हैं, जिसमें बताया गया कि वीक सोशल टाई, वीक सोशल टाई का मतलब ये होता है, जो आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं तो आपको एक बार एक ग्रुप में बना दिया गया 10 लोगों का ग्रुप, तो उनमें से कुछ नौजवानों से आपकी मुलाकात हो गई, दोस्ती हो गई, ये रिश्ता बाकी रहता है। अब मज़ीद उस ग्रुप में आप नहीं, उस कंपनी में नहीं, लेकिन ये रिश्ता आप बाकी रखते हैं। आप फ्लाइट में जा रहे हैं, बाजू किसी एक लड़के से मुलाकात हुई, किसी मैडम से मुलाकात हुई, मालूम हो कि फ़लाँ कंपनी में काम करते हैं, फ़लाँ उनका प्रोफेशनल एक्सेलेंस है, आपने कार्ड ले लिया, फिर कभी आपको ज़रूरत पड़ी तो आपने उन्हें कनेक्ट किया, वहाँ से आपका काम हो जाता है। रिसर्च बताता है कि दुनिया में 90% ऑफ रिसर्च ओरिएंटेड पेपर्स जो हाई प्रोफाइल जर्नल्स में शाये होते हैं, वो दोस्त होते हैं जो वीक सोशल टाई में करीब आते हैं। स्ट्रॉन्ग सोशल टाई के दो लोगों ने मिलकर किसी चीज़ को इनोवेट किया हो, ये आपको रिकॉर्ड में कम मिलेगा। वीक सोशल टाई से नेटवर्किंग जो खूबी है सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स की, ये दुनिया में जहाँ जहाँ लोग मिलते जाते हैं उन सब की वो नेटवर्किंग करते हैं, और बवक्त ज़रूरत किसको कहाँ टैप किया जाए यू नो बेटर। कोविड आ जाए तो पैसे किससे लेना चाहिए वो भी आपके जहन में है। आप प्रोफेशनली कहीं फंस गए तो किससे हेल्प लेना चाहिए, वो एक दूसरा आदमी है। आपके किसी बंदे को जॉब दिलाना है तो एक तीसरा बंदा आपके पास मौजूद है। ये कोई स्ट्रॉन्ग सोशल टाई नहीं है, दीज आर ऑल वीक सोशल टाइज, एंड IT प्रोफेशनल्स आर वेरी एक्सपर्ट इन फॉर्मिंग दीज सोशल नेटवर्किंग। एम आई राइट? ये आपके लिए सही है ना? भाई मेरा भी तजुर्बा है, हम व्हाट्सएप ग्रुप में रहते हैं, मेरी एक तकरीर लोग पोस्ट करते हैं, 2 घंटे के बाद वापस मुझे पोस्ट होना शुरू हो जाता है। दिस इज स्ट्रॉन्ग सोशल टाई है। वीक सोशल टाई में ये है कि हमारे एक दोस्त ने उनके कजिन ब्रदर को जो अमेरिका में रहते हैं उनको उन्होंने पोस्ट कर दिया हमारा एक लेक्चर। उन्होंने क्या किया, 2 दिन लेक्चर सुनने के बाद लगा कि सब ये काम की चीज़ है, तो उन्होंने 84 लोगों का ग्रुप बनाया अपने कजिन ब्रदर्स सिस्टर्स का, जो अमेरिका में हैं, इसरो में हैं, इंग्लैंड में हैं, प्रोफेसर हैं और इस तरह के लोग हैं, और उन तक हमारा वो पैगाम पहुंच गया जो स्ट्रॉन्ग सोशल टाई से कभी पहुंच नहीं सका। जो वीक सोशल टाई होता है, कहीं से एक लिंक बनती है और उस लिंक के ज़रिए से आपका काम, आपका मैसेज, आपका पैगाम पहुंच जाता है। तो प्रोफेशनल्स हु आर IT प्रोफेशनल्स, तो ये IT प्रोफेशनल्स के बारे में सर्टेन रिसर्च है जो साइकोलॉजिस्ट ने किया है, वो मैंने आपके सामने रखा। आपके नज़दीक कौन हिस्ट्री में मोस्ट प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग माना जा सकता है? आपके नज़दीक कैन यू नेम एनीबडी, एनी पर्सन whom you know who can be called as the most productive person in whole of human history? What is your guess? Yes, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, most productive personality. देखिए दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्टोरियन है अल्फोंसो डी लैमार्टाइन, ही इज़ अ फ्रेंच हिस्टोरियन। उसकी किताब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और उसके ये शानदार जुमले हैं, आप 10 बार पढ़िए उस जुमलों को और देखिए कि प्रोडक्टिव प्रोफेशनल मुस्लिम क्या होता है। उसके लिए हमारे लिए रोल मॉडल है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन रोल मॉडल है। हाउ टू बी ए प्रोडक्टिव पर्सन, how to be a professional person, how to be a great businessman, how to be a good father, how to be a good husband, how to be a great warrior, how to be a great strategist,
हाउ टू बी ए ग्रेट इकोनॉमिस्ट, हर पहलू से द मोस्ट प्रोडक्टिव पर्सन विद द अर्थ हैज सीन, ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कहता है। गौर से देखिए, इफ द ग्रैंड्यूर ऑफ द एम, द स्मॉलनेस ऑफ द मीन्स and the immensity of the results are the three measures of man's genius, who would dare humanly compare a great man of modern history with Muhammad sallallahu alaihi wasallam? डी लेमर्टाइन कहता है कि 3 क्राइटेरिया पर इंसानों को जांचा जाएगा ग्रेटनेस को। मकसद कितना अजीम है, मैं मेरी बीवी बच्चे सलामत, इसके लिए मैं रोजी रोटी कमाऊं, ये कोई बड़ा मकसद नहीं है। सही है, ये कोई बहुत बड़ा मकसद नहीं है। मैं अपने सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल दोस्तों के लिए कुछ काम कर लूं, ये कोई बड़ा मकसद नहीं है। दुनिया में जो सबसे बड़ा मकसद हो सकता है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, ये कहता है सारी इंसानियत की फिक्र करना, और सारे जो है ग्लोब पर जितने इंसान बसते हैं सबकी दुनिया और आखिरत की भलाई चाहना। इफ द ग्रैंड्यूर ऑफ द एम, द स्मॉलनेस ऑफ द मीन्स, सबसे कम वसाइल आपके पास मौजूद थे, अफराद भी कम थे, पैसे भी कम थे, टेक्नोलॉजी भी कम थी, तो कम से कम वसाइल में बड़े से बड़ा मकसद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा असरात पैदा करना। तो ये 3 क्राइटेरिया वो कहता है कि किसी को भी मेजर करना हो तो रिजल्ट्स कितने दूर तक फैले, कितना बड़ा एम था, कितना कम जो है वसाइल थे, और कितने अजीम उसने असरात मुरतब किए। अगर इस स्केल पर किसी को मेजर किया जाए तो मोस्ट प्रोडक्टिव मैन दुनिया में अगर पैदा हुआ है तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। देखिए, उसने कहा कि फिलोसोफर, ओरेटर, अपोजल, लेजिस्लेचर, वॉरियर, कॉन्करर ऑफ आइडियाज, restorer of a national dogma for a cult without imagery, founder of 20 earthly empires and of one spiritual empire, this is Muhammad. तो प्रोडक्टिव मुस्लिम कैसे होना है, तो उसके लिए इससे ज़्यादा बेहतर कोई मिसाल नहीं है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें मिलती है कि ऐसे प्रोडक्टिव हमें भी बनना है। कैसे बनना है हम आखिर में लेते हैं। मेंशन ऑफ प्रोडक्टिव प्रोफेशनल्स विद पाथ ब्रेकिंग आइडियाज इन कुरान। असल में बड़ा आदमी वो होता है जो कोई पाथ ब्रेकिंग आइडिया दे, जो हिस्ट्री को चेंज कर दे, जो इनोवेटिव हो, जो वो सोचे जिसका वजूद दुनिया में ना हो, विजुअलाइजेशन कर सकता हो। दोज हु कैन क्रिएट ए लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री, उसको कहते हैं पाथ ब्रेकिंग आइडिया वाला। कुरान में इस तरह के पाथ ब्रेकिंग आइडियाज के हमें 5 नाम मिलते हैं, 6 नाम मिलते हैं, एक नाम यहां मिस हो गया। पहला नाम मिलता है वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का। इस पर मैंने बहुत तफसील से आर्टिकल भी लिखा है कि शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी को दुनिया को वाकिफ कराया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने। कोई आसान बात नहीं है शिप बनाना। जो शिप बनाते हैं टिम्बर से बनाना, टिम्बर में हज़ारों वैरायटीज़ है, उसमें पर्टिकुलर कौन सी वैरायटी का टिम्बर लें जो लाइट वेट हो, जो डिकम्पोज ना हो पानी में, जिसे आसानी से जोड़ा जा सके, जिसे बेंड किया जा सके, इसको सेलेक्ट करना पड़ता है। नेल्स उस ज़माने में नहीं थे, उसके बावजूद जॉइंट करना होता है, ज्योमेट्री जानना पड़ता है उसे बनाने के लिए, लॉ ऑफ बॉयंसी को जानना पड़ता है शिप बनाने के लिए, ओशनोग्राफी को जानना पड़ता है, ओशनोलॉजी को जानना पड़ता है। इस पर अमेरिका में अभी करीब में एक बंदे ने शिप बनाया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के शिप के मेजरमेंट्स जो बाइबल में मिलते हैं उसकी बुनियाद पर हैरत अंगेज़ बनाया, काफ़ी बड़े इस पे मेजरमेंट पर उसने बनाया है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पाथ ब्रेकिंग आइडिया दुनिया को दिया, तो उन्होंने शिप बनाने का आइडिया दिया। उससे पहले लोग जो है कैटामरान जिसे कहते हैं कि अगर कोई बोसीदा लकड़ी है तो उस लकड़ी पर सवार होकर नदी के इस किनारे से उस किनारे तक जा सकते थे, लेकिन पानी में ट्रैवल नहीं कर सकते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इज़ द फर्स्ट पर्सन हु गिव अस द शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी। सब अल्लाह ताला कराता है। पेंसिलिन ईजाद होता है तो वो भी अल्लाह ताला ही जहन में डालता है, सही है ना। लॉ ऑफ ग्रेविटी अगर न्यूटन फाइंड आउट करता है तो वो भी अल्लाह ताला डालता है, लेकिन इंसानी मेहनत उसके पीछे होती है। नंबर दूसरा नाम नूह अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत यूसुफ का, पाथ ब्रेकिंग आइडिया जो देने वाले लोग, प्रोडक्टिव मुस्लिम। कुरान हमें बताता है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कारनामा यह कि उस ज़माने का एक बड़ा मुल्क इजिप्ट और उसके सराउंडिंग्स, जिसमें आज हम कह सकते हैं अल्जीरिया, टूनीशिया, मोरक्को, जॉर्डन और पैलेस्टाइन और सीरिया तक ज़बरदस्त कहत पड़ा।
उस कहत के नतीजे में फसल का उगना बंद हो गया, लेकिन 7 साल में उसे स्टोर करना था। तो 7 साल अगर कोई स्टोर करे इतनी बड़ी ह्यूमैनिटी के लिए, इतने बड़े मुल्क के लिए, तो क्या कोई आसान बात है? घर में अगर हम अपने घर वालों से कहते हैं कि 1 महीने 1 साल का राशन स्टोर करना है, तो अब हमारे पास वो मेथड्स नहीं है। पहले ज़माने में बड़े बड़े घड़े होते थे, शायद आप लोगों को याद होगा, ठीक है ना। अब नहीं कर सकते हम, एक साल का नहीं कर सकते, लेकिन कई कौमों के लिए, एक मुल्क के लिए नहीं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुछ तो ईजाद किया होगा, ग्रैनरीज बनाए होंगे, साइलोज बनाए होंगे, वेयर हाउसेस बनाए होंगे, कुछ तो किया होगा। उस पर मेरा एक आर्टिकल है, मैंने उसमें बताया है कि एक बाज़ लोगों का कहना है कि पिरामिड्स जो उससे पहले भी 1-2 मरतबा बनाए जा चुके थे, जो ओल्डेस्ट कार्बन डेटिंग हुई है वो, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में अराउंड 250 ईयर्स का गैप है, तो वो एरर मुमकिन है। तो बहरहाल आपने कुछ किया, दुनिया को बताया कि कैसे जो है फूड ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है और एक लंबी मुद्दत के लिए स्टोर किया जाता है, और कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। पाथ ब्रेकिंग आइडिया देने वाले प्रोडक्टिव मुस्लिम का दूसरा तारुफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, जो यहाँ मैंने नहीं लिखा है। तीसरा है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में मान लीजिए, समझ लीजिए अच्छी तरह से कि आप 1000 BC के आदमी हैं एग्जैक्टली, और 1000 BC से पहले का जो एज है उसको ब्रॉन्ज एज कहते हैं। दुनिया में उस ज़माने में आयरन का इस्तेमाल लोग नहीं जानते थे। आयरन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आयरन को मेल्ट करने के लिए 1500 डिग्री सेंटीग्रेड की लाइनिंग चाहिए फर्नेसेस में, और वो फर्नेसेस की वो लाइनिंग उस ज़माने में किसी ने ईजाद नहीं की थी। ब्रॉन्ज को पिघलाना हो तो 900 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड में पिघला सकते हैं। तो लोहे, यानी आप अगर गूगल आउट करके देख लेंगे ब्रॉन्ज एज और आयरन एज का कहाँ से शुरुआत है, ब्रॉन्ज एज कहाँ ख़त्म, आयरन एज की शुरुआत कहाँ है, 1000 BC आपको गूगल जवाब देगा। एग्जैक्टली वही ज़माना है जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का है। और मैंने अभी आयत पढ़ी कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान ने कहा कि वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला, हमने दाऊद को अपनी तरफ से एक खुसूसियत अता की थी, एक फ़ज़ल अता किया था। या जिबालु अव्विबी माहू वत्ताइर, जब वो तराना पढ़ते थे सुबह में तहज्जुद के वक्त, तो आपका साथ देते थे पहाड़ भी और परिंदे भी। वह अलन्ना लहुल हदीद, और हमने उन्हें लोहे को नरम बना दिया था। अब जिन लोगों के पास स्टडी नहीं, वो समझते हैं कि एक मौजूदा था, ऐसे लोहे को लेते थे, यूँ पिघलाते तो मोम की तरह पिघल कर गिरता था, ऐसा समझते हैं। उससे इंडस्ट्री नहीं चला सकते, उससे कोर्ट्स नहीं बना सकते। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इन सब चीज़ों पर अभी जो फाइंडिंग्स हुए हैं, अब आप देखिए, क्या भाई काम नहीं कर रहा, बैटरी ख़त्म। ज़रा रुक जाइए। ये है वेस्ट बैंक, जेरूसलम, इसराइल, या इडोम है। इस जगह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फर्नेसेस बनाए थे, और इस पर अभी 2005 से 2011 के बीच में इसराइल की गवर्नमेंट ने एक्सकवेशंस किए, 2005 से 2011 के बीच में, और वो साइट्स पाए गए जहाँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इंडस्ट्रीज़ बनाई थी। आपके ज़माने के फर्नेसेस मिले, आपके ज़माने के माइनिंग के साइट्स मिले जहाँ से ओर लिया जाता था। तो ये डिटेल है यहाँ, ये वो इलाका है। ही मेड फाइन वॉर कोड्स, एक तो उससे ज़रह बनाते थे, उससे पहले दुनिया में सेफ्टी के लिए आज जो आप कह सकते हैं पैट्रियट मिसाइल या आयरन डोम जिसे कहते हैं सेफ्टी के लिए, वो जो इन्वेंशन है वॉर में अटैक से बचने के लिए, वही वैल्यू थी उस ज़माने में जब आपने वॉर कोड्स बनाए थे। इससे पहले ऐसा कोई तसव्वुर नहीं था कि जंग में कोई आदमी अपनी जान की कैसे हिफाजत कर सके। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यह कारनामा अंजाम दिया और वॉर कोड्स बनाए, ज़रह बनाई। उस ज़रह बनाने के नतीजे में इंसानों की जान बचती थी। उसके अलावा और बहुत सी चीज़ें बनाई। मैनी मेटालिक ऑब्जेक्ट्स वर मेड। और इडोम, नेगेव, ये दो इलाके हैं जहां आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन बिटवीन 2005 एंड 2011 रिवील फर्नेसेस, टूल्स, नेगेवियन पोटरी, नेगेवाइट वेयर, पेंट मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें वहाँ एक्सकवेशन में पाई गई। वो सारी किताबें मौजूद हैं, मेरे पास भी मौजूद है, मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये देखिए कि उसके एक्सकवेशन वगैरह, ये वो किताब है
इस किताब में आप देख सकते हैं अनअर्थिंग द विल्डरनेस, स्टडीज ऑन द हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी ऑफ नेगेव एंड इडोम इन द आयरन एज, ये किताब है। इस किताब से मैंने ये मवाद लिया है। ये है वो इसराइल का इलाका जिसमें ये सारे जो मैंने बताए, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ उन्होंने काम किया। ये इसराइल का इलाका है। इस इलाके में एक्सकेवेशन एट नेगेव, एक्सकेवेशन एट इडोम, ये दो इलाके हैं जिसके एक्सकेवेशन पर मबनी वो किताब है। और उस किताब की बुनियाद पर मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से आपने पूरी सोसाइटी के लिए एक नई टेक्नोलॉजी दी, पूरी दुनिया को आपने आयरन और से तारुफ कराया, आयरन एज में दुनिया को पहुंचा दिया। आज आयरन के बगैर ज़िंदगी का आप तस्वर नहीं कर सकते। ये ट्रस आप देख सकते हैं, ये स्टेज आप देख सकते हैं, कंक्रीट आप देख सकते हैं, आप जिस चेयर पर बैठे हैं, हर चीज़ जो है आयरन से मुताल्लिक़ है। और इसको दुनिया में तारुफ करवाया, आयरन एज में दुनिया को पहुंचाया। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हमें मालूम होता है कि अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जहाँ दावत के मैदान के टॉप मोस्ट लीडर्स थे, वहाँ सिविलाइजेशनल चेंज और ह्यूमन हिस्ट्री के कंट्रीब्यूटर्स में भी टॉप मोस्ट पाए जाते थे। ये हमारे लिए उसवा हैं, अम्बिया और रसूल। ये जो है तिमना है, ये इजिप्ट और इसराइल के कॉर्नर में है जहां कॉपर के ओर्स पाए जाते थे। काफ़ी बड़े डिपॉजिट, टन्स ऑफ डिपॉजिट्स एक्सकवेशन में मिले इस इलाके में। यह है एक पूरा इलाका। आपको सिविल इंजीनियरिंग से दिलचस्पी हो तो सिविल इंजीनियरिंग में यही करते हैं कि इसके मार्किंग करते हैं। और L199 ये वो इलाका है जिसमें इस तरह के फर्नेसेस पाए गए। ये माइन है, ये माइनिंग साइट है। माइनिंग साइट में ये तो हॉरिजॉन्टल माइनिंग है और बाज़ जगह वर्टिकल माइनिंग है जहाँ से आयरन ओर निकाला जाता था। और जो कुछ उस ज़माने की टेक्नोलॉजी थी उसका इस्तेमाल किया, आयरन को निकाला, फर्नेस में उसको जो है मेल्ट किया और उससे बहुत से मेटल वेयर्स आपने बनाए। ये हो गए तीसरे रसूल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। नंबर 2 कौन थे? यूसुफ। नंबर 3 दाऊद। और नंबर 4 हमने यहाँ बताया था सुलेमान। नंबर 4 सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसी सल्तनत दी कि उसके बाद किसी को दुनिया में ऐसी सल्तनत नहीं मिली। आपने जो तहजीब कायम की, आपने जो हिस्ट्री पर इम्पैक्ट पैदा किया, आपने जो मार्केट कायम किया, आपने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, आपने सोसाइटी को जो चेंज किया, दुनिया में कोई बादशाह ऐसा नहीं है जिसने इतना बड़ा इम्पैक्ट पैदा किया हो। और 300 ईयर्स तक वो इम्पैक्ट पाए जाते थे। ये जो 2005 से 2011 में मैंने 2 साइट्स का जिक्र किया, इडोम और नेगेव, तो वहाँ के साइट्स के एक्सकवेशन की बुनियाद पर ये फाइंडिंग्स हमारे सामने आते हैं। ये किताब है प्रॉफिट्स एंड मार्केट्स, एक मोटी किताब है प्रॉफिट्स एंड मार्केट्स। उसमें अंबिया इकराम यानी हज़रत सुलेमान और उसके बाद के और दीगर नबी, उनके ज़माने में किस तरह से ट्रेड को उन्होंने फ़रोग़ दिया, मार्केट को कैसे उन्होंने फ्लरिश किया, इस पर यह डिटेल है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर वाज इसराइल, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एट इट्स पीक, गुड्स रीच चाइना, अफ्रीका एंड इंडिया, एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था उस ज़माने में। यूटेंसिल्स एंड पॉटरी नियर जॉर्डान, वहाँ जो एक्सकवेशन हुआ वहाँ ये सब मिले। व्हील वाज यूज, उससे पहले व्हील का इस्तेमाल पब्लिक में नहीं होता था, वो व्हील के ज़रिए से पॉटरी जो बनाते थे, ये सारी टेक्नोलॉजी को उन्होंने ईजाद किया। टेक्सटाइल्स होते थे, उलन यार्न, टूल्स मेड फ्रॉम आयरन, लूम, वेट्स, यानी ये इंडस्ट्री के लिए टूल्स चाहिए, आयरन चाहिए, लूम चाहिए, वेट्स चाहिए, ये था। लेदर इंडस्ट्री को आपने कायम किया। ऑलिव ऑयल की फैक्ट्रियाँ थी, ऑलिव ऑयल के कैन मौजूद थे, उस पर लिखे हुए थे कि ये ऑयल के ये बैरल्स कहाँ जाएंगे। ऑयल तो नहीं पाए गए लेकिन बैरल में नाम आज भी पाए गए। जब एक्सकवेशन किया गया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो 2 बड़ी बड़ी बंदरगाहें बनाई थी, उन बंदरगाहों पर, सी पोर्ट पर ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी। इसी तरह से हाई क्वालिटी आयरन ओर वाज फाउंड इन ट्रांस जॉर्डानियन एरिया, इन सिनाई एरिया। 1 लाख टन्स ऑफ स्लैग वाज फाउंड। स्लैग तो आप समझते हैं कि मेटल को इस्तेमाल करने के बाद उसकी जो राख होती है वो 1 टन जो है वहाँ आज भी एक्सकवेशन के दौरान उन्होंने पाया। हाउसिंग कॉलोनीज पाए जाते थे, एग्रीकल्चर को उन्होंने फ़रोग़ दिया। इस तरह से और ताज्जुब होता है कि उस ज़माने में मार्केट में जिस तरह से आज कार लॉरीज़ का इस्तेमाल होता है, वैसे घोड़े, गधे, खच्चर,
इन सब की ट्रेनिंग करके उनके मार्केट्स होते थे, और पर्टिकुलर इस्तेमाल के लिए, जंगों में ले जाने के लिए, दूर के एक्सपेडिशंस में जाने के लिए जो घोड़े, जो खच्चर, जो गधे चाहिए थे, उसकी भी मार्केट थी उस ज़माने में, और 300 साल की तारीख बताती है। तो मोस्ट प्रोडक्टिव मुस्लिम कैसे होता है, दुनिया में कैसे इम्पैक्ट छोड़ कर जाता है, फुटस्टेप्स छोड़ कर जाता है, लिगेसी छोड़ कर जाता है, अपने लिए नहीं जीता, वो पूरी दुनिया की तारीख को बदल कर जाता है, ये होता है प्रोडक्टिव मुस्लिम। तो कुरान में हमें एक और रसूल का तस्करा मिलता है। तो इस तरह से एक और का दो और नाम भी हैं जिस पर मैं अभी बात नहीं करूंगा। एक है मलिका सबा का जिक्र है कुरान में। She was the first person to introduce agriculture as an industry. She was the first person to build dams, canal irrigation, सारी चीज़ों को उसने ईजाद किया। और एक और पर्सन का नाम है कुरान में जुल्करनैन का, जिन्होंने मेटल को पिघलाकर दीवार को बनाया, जुल्म से लोगों को रोका, इसका भी तस्करा मिलता है। तो प्रोडक्टिव मुसलमान कैसे होता है, दुनिया में इंसानियत के लिए कुछ कर जाता है। अपने लिए तो जीने वाले दुनिया में करोड़ों पाए जाते हैं, इंसानियत के लिए जीने वाले कम लोग होते हैं। तो ये वो असल है जो इस प्रोग्राम का भी मकसद है। हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए कुरान जो मॉडल पेश करता है उस तरह से हम बने। अब हम आते हैं कि 3 पॉइंट प्रोग्राम आपके सामने रखेंगे। हाउ टू बी ए प्रोडक्टिव मुस्लिम, हाउ टू बी ए गुड प्रोफेशनल, हाउ टू बी ए पर्सन हु कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, टू द वेल बीइंग ऑफ ह्यूमैनिटी। तो क्या कर सकते हैं, 3 बातें हैं इसमें। नंबर 1 ये है कि अंडरस्टैंड द लार्जर मिशन। ये समझ लीजिए कि हमारा मिशन क्या है, हमारे पैदा करने का मकसद क्या है। अल्लाह ताला ने हमें बेकार पैदा नहीं किया, अबस पैदा नहीं किया, पर्पसलेस पैदा नहीं किया। हमको अल्लाह ताला ने एक मकसद के लिए पैदा किया। मैंने कई जगह ये किस्सा भी सुना है। अभी करीब में एक शहर में गया था मैंने वहाँ मेडिकल कॉलेज में भी एड्रेस किया स्टूडेंट्स को, और दिन भर मेडिकल प्रोफेशनल से मेरी मुलाकातें रहीं। शाम में जो है डॉक्टर्स की एक मीटिंग थी। वो मीटिंग 10 बजे शुरू हुई, 11 साढ़े 11 तक ख़त्म होना था, लेकिन रात के 1:30 बजे तक मीटिंग चली। डॉक्टर्स ने कहा कि दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट पैथेटिक सिचुएशन ऑफ आवर कम्युनिटी। उन्होंने कहा कि जब हम पढ़ लिख लेते हैं, हम पैसे वाले हो जाते हैं, हम नामवर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो हमें समाज से कोई दिलचस्पी नहीं होती। हम अपने घर से निकलते हैं, हम अपने कॉलेज जाते हैं या हॉस्पिटल जाते हैं, जब बड़े डॉक्टर्स हैं, फिर वापस अपने घर आते हैं। इसके अलावा हमारा जहन किसी और तरफ नहीं जाता। उन्होंने बताया कि हमारे घर के अतराफ में जो झुग्गी झोंपड़ी है, जो झोंपड़ पट्टी है, वहाँ जो औरतों के मसाइल हैं, वहाँ जो बच्चों के मसाइल हैं, उन तक हमारी निगाह नहीं जाती। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि CAA के ज़माने में जो हमारी शहरियत से मुताल्लिक़ था, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन कभी हमें तौफीक नहीं जाकर देखे कि क्या प्रोटेस्ट है। मैंने उनके घर को देखा, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर हूँ। इतना शानदार, इतना खूबसूरत घर उन्होंने बनाया था। उन्होंने कहा कि देखिए, ये हमारी ट्रेजिडी है कि जब हम पढ़ लिख लेते हैं, पैसे वाले हो जाते हैं, तो हमें समाज से कोई दिलचस्पी नहीं होती। उसके बाद उन्होंने कहा इसीलिए हमारा जो MBBS डिग्री है, मैं, मेरी बीवी, बच्चे सलामत। उन्होंने कहा मुझसे, मेरी बीवी बच्चे सलामत, MBBS। तो पहली बात है, समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने हमें एक बड़े मकसद के लिए पैदा किया। खाना पानी ये सब कुछ दिनों के लिए। मेयारी ज़िंदगी बड़ी रहे तब भी जाना है, मेयारी ज़िंदगी कम रहे तब भी हमें लौट कर जाना है। लेकिन असल काम जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें भेजा वो है लिविंग फॉर अदर्स। आर वी लिविंग फॉर अदर्स? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। तुम्हें अल्लाह ताला ने लोगों के लिए निकाला है। लोगों की क्या फ़िक्र करते हो, लोगों की भलाई का क्या काम करते हो, लोगों की भलाई के लिए क्या सोचते हो। जहन खाली हो तो लोगों के लिए सोचा जाएगा, लेकिन जब हम अपने ही मरकज़ में और महवर में घूमते रहें, सेल्फ सेंटर्ड लाइफ हमारी हो, तो फिर हम दूसरों के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो पहली चीज़ ये है कि हाउ टू बी प्रोडक्टिव के लिए फर्स्ट स्टेप इज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द ग्रेटर पर्पस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी फॉर विच इट हैज़ बीन क्रिएटेड। कुरान ने हमें बताया कि यू हैव बीन क्रिएटेड फॉर ए ग्रेटर पर्पस एंड यू आर द लीडर ऑफ द नेशंस। यू हैव बीन क्रिएटेड फॉर पीपल। आर वी रियली डिस्चार्जिंग आवर ड्यूटी? क्या हमें मालूम है कि हमें क्या करना है? ये पहला काम है हाउ टू बी प्रोडक्टिव के लिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि डिस्कवर हु यू आर। ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है, इसको समझना चाहिए। हम में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हर आदमी यूनिक है। हर आदमी यूनिक है। मेरे जैसा इंसान न इससे पहले कोई पैदा हुआ, न इसके बाद कोई पैदा होगा।
आई एम द ओनली वन पर्सन इन द होल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, मेरे जैसे फिक्र रखने वाला, मेरे जैसे मिजाज रखने वाला, मेरी जैसी चीज़ें करने वाला कोई और नहीं। इसी तरह आप में से जितने लोग हैं, आपकी जो खूबी है इनके अंदर नहीं, इनके अंदर जो सलाहियत है इनके अंदर मौजूद नहीं, इनके अंदर जो टैलेंट है इनके अंदर मौजूद नहीं। ये जो काम कर सकते वो काम आप नहीं कर सकते, आपसे जो काम हो सकता है वो काम वो नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने हर एक, देखिए खुदा ताला के पास नौज़बिल्ला मास प्रोडक्शन का काम नहीं होता। जैसे किसी कार की फैक्ट्री के पास चले जाएं, साइकिल फैक्ट्री, ये जो आप चेयर्स देखते हैं, चेयर्स बनाने वाली कंपनी चेयर्स ढालते 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 चली जाती है, हज़ारों की तादाद में चेयर्स बन जाते हैं, दैट इज़ मास प्रोडक्शन। लेकिन अल्लाह ताला मास प्रोडक्शन का काम नौज़बिल्ला नहीं करता कि सबको इंसानों को ढाल 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 कर दुनिया में भेज दिया। उसने एक एक को बनाया तो एक पर्पस के लिए बनाया। वो पर्पस आप ही पूरा कर सकते, आपका भाई नहीं कर सकता, आपका पड़ोसी नहीं कर सकता, आप ही के लिए अल्लाह ताला ने काम दिया। द क्वेश्चन इज, डू यू नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर क्रिएशन? मैं जनरलाइज जवाब नहीं चाहता। जनरलाइज जवाब एक, अल्लाह ताला ने हमको इबादत के लिए पैदा किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, नहीं, वो तो जनरलाइज है। व्हाट इज योर पर्सनल कंट्रीब्यूशन? आपको अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया? आपको बेकार तो नहीं पैदा किया। ऐसा नहीं कि आपको नहीं पैदा करता तो काम चल जाता, नहीं, आपको पैदा किया तो एक काम है, एक पर्पस है, एक मिशन है। व्हाट इज दैट पर्पस? व्हाट इज दैट मिशन? हैव वी एवर ट्राइड टू पॉन्डर ओवर हु एम आई? व्हाट इज माई यूनिकनेस? व्हाट इज माई टैलेंट, आउटस्टैंडिंग टैलेंट? व्हाट इज दैट विच आई कैन गिव टू द सोसाइटी विच नो वन एल्स कैन डू इट? तो ये जिस दिन हमें मालूम हो जाएगा उस दिन रियली हम प्रोडक्टिव बनेंगे। मुझे मालूम होना चाहिए। देखिए, मैं ये कहता हूं कि अल्लाह ताला हमको एक दरख्त के मानिंद बनाया। हर दरख्त यूनिक है। सेब का दरख्त अलग है, आम का दरख्त अलग है, इमली का दरख्त अलग है, नारियल का दरख्त अलग है। आप नारियल का दरख्त हो सकते हैं, मैं इमली का दरख्त हो सकता हूं। मुझे कभी तमन्ना नहीं करनी चाहिए कि मैं आपके जैसा लंबा हो जाऊं। आपको कभी ये तमन्ना नहीं करनी चाहिए कि आपके अंदर ब्रांचेस लग जाएं। आपको अल्लाह ताला ने एक पर्पस के लिए पैदा किया, आप वो काम कीजिए। मुझे जिस मकसद के लिए अल्लाह ने पैदा किया वो काम मैं करूं। अगर जिस दिन आदमी ये पहचान ले कि हु एम आई, तो मैं अपना काम करना शुरू करूंगा। ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम पहचाने अपने आप को, हु यू आर। मैं इसीलिए कहता हूं कि दरख्त एक बीज के मानिंद है, उसको ज़मीन में बोते हैं, फिर वही बीज जो है दरख्त बनता है, धीरे 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 डेवलप होता है, ग्रो होता है। अलम तरा कैफ़ा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा। कुरान ने कहा तो उती उकुलहा कुल्ल हीन बिइज़्नि रब्बिहा, कि एक दरख्त एक बीज जैसे ज़मीन में बोया गया, वो बाहर निकलता है, कोंपल फोड़ता है और उसके बाद हल्के से गदराता है, फिर पौधा बनता है, फिर तनावर दरख्त बनता है, फिर उसकी शाखें मुहीब हो जाती हैं। उस बीज के अंदर लिखा हुआ है कि दरख्त कितना बड़ा होगा, इसमें कितने फूल लगेंगे, इसमें कितने फल लगेंगे, और वो सब के लिए बेनिफिशियल हो जाता है वो प्लांट। उसमें गिलहरियाँ आती हैं, उसमें तितलियाँ आती हैं, उसमें परिंदे आते हैं, उसमें जानवर आते हैं, उसके साए में आराम करते हैं, उसके फूल का फ़ायदा उठाते हैं, उसके फलों का फ़ायदा उठाते हैं, और जब ख़त्म हो जाए तो उसकी लकड़ी का फ़ायदा उठाते हैं, उसका साए से फ़ायदा उठाते हैं। हर इंसान हम में से ऐसा ही है कि हम आर वी रियली बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। दरख्त के मानिंद हैं हम, तो हम कितने लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं? हमारी शाखें कहाँ तक फैली हुई हैं? हम किस किस को साया देते हैं, हम किस किस को फल देते हैं, हम किस किस को फूल देते हैं? डिस्कवर योर सेल्फ हु रियली आर यू। तो ये फाइंड आउट करना है। इसके लिए इस तरह से कर सकते हैं, व्हाट आर योर कोर वैल्यूज़ इन लाइफ, व्हाट आर योर मेन टैलेंट्स एंड पैशन, व्हाट आर योर टॉप स्किल्स, व्हाट आर योर विजन एंड मिशन इन लाइफ, what are your strongest beliefs, what would you call your main attribute if you were to limit yourself to one? अगर आपसे हम पूछेंगे भाई आप अपना तारुफ कराइए एक वर्ड में, सिंगल वर्ड में, तो आप बताने के काबिल हों कि ये मैं हूँ, है ना? नाम नहीं चाहिए हमें। आप ये बताएं कि who really are you, तो आप ये बताएं कि एक लफ्ज़ में आप बता सकते हैं, I'm a contributor, I'm a social worker, है ना? कुछ भी आप हो सकते हैं। तो वो फाइंड आउट करना आपका बड़ा काम है। सेकंड है, पहला ये है कि अंडरस्टैंड द लार्जर मिशन, एंड द सेकंड वन इज दैट अंडरस्टैंड हु यू आर। तो आप पहले डिस्कवर योर पर्सनल ब्रांड, क्रिएट योर पर्सनल ब्रांड, एक्ट इन ट्यून विथ योर आइडेंटिटी। यहाँ से जाने के बाद आप अपनी आइडेंटिटी को पहचानिए। मैं ये बन सकता हूँ कि आई कैन बी ए ग्रेट orator, I can be a great writer, I can be a great poet, I can be a lyricist, I can be a singer, I can be a great artist, I can be a social worker, and I can be a person of networking, I can be a politician. तो मैं क्या बन सकता हूँ मुझे फाइंड आउट करना है, और फिर मुझे अपने अमल को इन ट्यून विद माई आइडेंटिटी करना है,
ड्रेस कंसिस्टेंटली विद दैट, ट्राई टू बी ए थॉट लीडर, नेवर स्टॉप नेटवर्किंग। तो ये दूसरे पॉइंट के तहत है। एंड मेंटेन एंड एक्सपैंड योर पर्सनल ब्रांड, फोकस ऑन योर क्वालिटी, अपडेट योरसेल्फ, डील विथ पीपल प्रूडेंटली। ये दूसरा है हाउ टू बी प्रोडक्टिव। तीसरा है हाउ टू बी प्रोडक्टिव का गोल चाहिए। अभी पैनल डिस्कशन में बात आ रही थी, गोल के बगैर आदमी कुछ कर नहीं सकता। बास प्रोफेशनल्स हैं, खुद मुझे भी भेजते हैं माई न्यू ईयर रेजोल्यूशन 5 पॉइंट, आई विल क्विट सिगरेट स्मोकिंग, आई विल डू एक्सरसाइज रनिंग, और जिम में जाऊंगा, नंबर 3 फला, नंबर 4 फला, नंबर 5 फला। दिस आर 5 रेजोल्यूशंस। एक हफ्ते के बाद देखे तो सिगरेट पीते हुए खड़े हैं। अब पूछा, अरे भाई आपने तो रेजोल्यूशन, नहीं वहाँ ज़रा बिरयानी खा लिए इसलिए हमने एक कश ले लिया। जिम के लिए जाना शुरू किए, नया शू, नए सूट पैंट, वो सारी चीज़ें खरीद लिया उन्होंने 5-10 हज़ार रुपए के, और उसके बाद मालूम हो गया 5 दिन के बाद जाना ही बंद कर दिया। मेरी एक क्लासमेट थी दुबई में, वो चलाती थी जिम। मैंने उससे पूछा कि तुम जो जिम चलाती हो तो उसमें कितने लोग कंसिस्टेंटली आते हैं? उसने कहा कि हम तो साल भर का वो लेते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं। पता नहीं मुझे यहाँ पुणे में कितने का लेते हैं, साल भर का होता है, बाद एक महीने का भी होता होगा। हाँ महीने का कॉस्टली होता, साल भर का। उसने कहा साल भर का। और जब उनका एक्सपायरी का टाइम होता है सब्सक्रिप्शन, तो हम मैसेज भेजते हैं, ऑटोमेटिक कंप्यूटर जनरेट करता है कि आपका सब्सक्रिप्शन खत्म होने वाला है, 15 दिन के अंदर आप आएंगे तो फलां बोनस पॉइंट मिलेगा, फलां मशीन भी मिलेगी जिस पर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, फलां पॉइंट मिलेगा, 1 महीने का एक्स्ट्रा मिलेगा। फिर वो भागे भागे आता है और पैसे भरता है, फिर 1 साल का सब्सक्रिप्शन। उसने मुझे बताया ओनली 7% ऑफ द पीपल आर कंसिस्टेंट। समझ में आई बात? भाई आपकी तमन्ना है कि मुझे जिम करना है, मगर कितने 7% लोग होते हैं जो कंसिस्टेंटली आउट ऑफ 365 डेज, हमारे पास साइकोलॉजी में हमारी ट्रेनिंग में यह है कि इफ यू वर्क 285 डेज कंसिस्टेंटली, इट इज सपोज टू बी फुल ईयर, विच इज कॉल्ड एज एन एवरेज डे। 285 के बाद आपके तकरीबन 70-80 डेज एवरेज डे नहीं होते। रमज़ान का महीना, शादी में चले गए, ट्रैवलिंग में चले गए, बीमार पड़ गए, वी एक्सक्लूड इट। 285 डेज भी अगर आप किसी काम को, तहज्जुद पढ़ना है, नमाज की पाबंदी करनी है, कुरान की तिलावत करनी है, 285 डेज, दैट इज कॉल्ड एज कंसिस्टेंट। कोई इश्यू है? तो what is the difference between your New Year resolutions, your Ramzan resolutions, and goal setting? What is the difference? How do you differentiate between your resolutions? Sometimes you take resolutions in the month of Ramadan, sometimes on New Year. So is there a difference? और बहुत से लोग बोलते हैं मुझे ये करना है, वो करना है। What is the difference between that and what is the difference between goal setting? Is there a difference or are both the same? Goal setting is a long term. See, what we say that I want to be this and this and this, I want to do this and this and this, I want to become this and this and this. This is what I call as a list of pious wishes, nothing more than that. A list of pious wishes. एक मुक़द्दस ख्वाहिशात थी कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, मैं नमाज का पाबंद बनना चाहता हूँ, मैं अरबी सीखना चाहता हूँ, मैं तजवीज़ सीखना चाहता हूँ, मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ। ये सब ख्वाहिशात हैं, तमन्नाएँ। ख्वाहिशात और तमन्नाओं को गोल नहीं कहा जाता। गोल जब कहते हैं तो गोल जो होता है वो स्मार्ट होता है। इट शुड बी स्पेसिफिक, इट शुड बी मेजरेबल, isn't it? It should be achievable. You must take the responsibility for getting those objectives and within the time frame. तो स्मार्ट होना होता है गोल सेटिंग को, और गोल सेटिंग नीड नॉट बी फॉर ए लॉन्गर टर्म। मेरा जो तरीका है वो मैं समझता हूँ कि गोल शुड ऑलवेज बी, एक बिगर गोल होता है, ये हायर पिक्चर एंड बिगर पिक्चर होता है कि आपको क्या बनना है डाउन द लाइन आफ्टर 5 years 10 years, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। लेकिन गोल तो 3 महीने का, 4 महीने का, रमज़ान तक का, रमज़ान के बाद का, तो ये आदमी तय करते चले जाता है मुझे ये लैंग्वेज सीखना है, मुझे कंप्यूटर की फ़लाँ स्किल सीखनी है, मुझे अरबी सीखना है, मुझे कुरान सीखना है, मुझे फ़लाँ काम करना है। तो ये आप 3-4 महीने में करते जाइए और उसको उठाकर फेंक दीजिए, वाइंड अप कर दीजिए, गो फॉर नेक्स्ट वन, हायर अप। तो ये तीसरा काम है कि
ये गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट ए विश, एक ख्वाहिश है। तो प्लान बनाना पड़ेगा, कब करना है, कैसे करना है, किसके पास सीखना है, कितने पैसे लगेंगे, कितने दिन के अंदर मुझे ये कोर्स करना है। जब आप ये सब तय करेंगे तब वो गोल बनता है। लास्टली, डिस्कवर योर पर्सनल मिशन, डिस्कवर हु यू आर, डिस्कवर योर पर्सनल मिशन। यहाँ से जाने के बाद मैं क्या करूँगा। प्रोडक्टिव बनने के लिए ज़रूरी है कि यू मस्ट हैव ए मिशन। वो मिशन ड्रीम नहीं, ड्रीम तो पहले होता है, सोचते हैं। अब मिशन स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि मुझे नेक्स्ट 6 महीने के अंदर ये काम करना है। बहुत कुछ काम दुनिया में करने के। मैं इंशाल्लाह शाम की तकरीर में बताऊंगा कि उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों की एक बड़ी तादाद ऐसी है जो मायूस है, मखमूम है, सैड है, होपलेस है और एजिटेटेड है। उनके पास सिर्फ मसाइल ही मसाइल हैं, शिकवे ही शिकवे हैं। मुसलमानों का ऐसा हो गया, मुसलमानों के लीडर्स ऐसे हैं, मुसलमानों की जमातें ठीक नहीं हैं, मुसलमानों के इदारे ठीक नहीं हैं, सब कुछ ये शिकायतें हैं। अब मैं ये बता रहा हूँ कि डिस्कवर योर पर्सनल मिशन बिफोर यू गो आउट ऑफ दिस हॉल। आप जहन में लिख लीजिए, बाद में घर में जाने के बाद लिखिए कि व्हाट इज़ योर पर्सनल मिशन, जिसे आपको करना है। शाम में मैंने जैसे कहा कि मैं बताऊँगा कि भाई 100 मसाइल लिख लीजिए हिंदुस्तान में। मुसलमानों में इत्तिहाद नहीं, मुसलमानों में इल्म नहीं, मुसलमानों के पास पैसों की कमी है, मुसलमानों से फलां है, गैर मुस्लिमों के मामलात, मुसलमान हिंदुस्तान के मुल्क के मामलात, इकॉनमी के मामलात, पॉलिटिक्स के मामलात। आप 100 इश्यूज़ को आप लिस्ट कर लीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते रोने से, लेकिन ज़रूर ये कर सकते हैं कि 100 में से 99 को आप इंटू मार दीजिए। एक इश्यू लेकर सोचिए कि मैं इस पर काम कर सकता हूँ, आई कैन डू समथिंग ऑन दिस फील्ड। आप उस फील्ड को लीजिए, उस पर काम शुरू कर दीजिए। मैं तलबा को पढ़ा सकता हूँ, मैं लोगों को गाइड कर सकता हूँ, मैं लोगों को प्रोफेशनल जॉब देने में मदद कर सकता हूँ, मैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकता हूँ, मैं लोगों को कुरान पढ़ा सकता हूँ, मैं औरतों को मैं सिलाई कढ़ाई सिखा सकती हूँ, औरतों को मैं एम्पावर कर सकती हूँ, हाइजीन सिखा सकती हूँ, हेल्थ के टिप्स दे सकती हूँ, झोंपड़पट्टियाँ जा सकती हूँ, वहाँ मैं कुछ काम करूँगी, माइक्रो फाइनेंस चलाऊँगी। आप कुछ काम कर सकती हैं, ये आपको तय करना है। तो 100 मसाइल को आप टिक कर दीजिए कि नहीं कर सकते, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। एक के बारे में तो आप तय कर सकते हैं कि आई कैन डू दिस, दिस इज़ माई कप ऑफ टी, लेट मी ट्राई। तो आप अगर तय करेंगे कि ये काम मुझे करना है, तो फिर आपका मिशन वहाँ से शुरू होता है। यहाँ से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। वरना वो तो बात, आप इंजीनियर होने के बावजूद आप MBBS रहेंगे। मैं भी इंजीनियर होने के बावजूद I'll be called as a person of MBBS। मैं, मेरी बीवी, बच्चे सलामत। अगर इस MBBS से बाहर निकलना है टू बी ए प्रोडक्टिव, तो पहले तो ग्रेटर मिशन ऑफ मुस्लिम उम्मा याद रखिए। नंबर 2, डिस्कवर हु यू आर। नंबर 3, डिस्कवर योर पर्सनल मिशन। ये मुझे 6 महीने तक के लिए, बहुत लंबा मत सोचिए, 6 महीने तक मुझे इस मिशन पे काम करना है। 6 महीने के बाद कुछ और नए मिशन पे काम करेंगे। प्रोफेशनल्स ने बेंगलुरु में बहुत शानदार काम किया, बहुत शानदार काम किया। हैदराबाद वगैरह की मिसाल आई। वैसे इत्तेफाक से शायद हमाद भाई को नहीं मालूम है कि हैदराबाद के PSF का इनाग्रेशन मैंने किया था। मैं बेंगलुरु से आया था उस वक्त। कहीं हम सब अच्छा वहाँ थे उस वक्त। आप रमज़ान में, एक रमज़ान की शाम में इफ्तार पार्टी में, तो बेंगलुरु के एक बेहतरीन हमारे यहाँ वो कुरान स्टडी सर्कल के प्रोडक्ट बैठे इम्तियाज़ काजी साहब। ज़रा उठिए, आप देखेंगे लोग, इनसे पूछिए कि ये उस प्रोफेशनल सर्कल से, कुरान स्टडी सर्कल जो प्रोफेशनल्स का सर्कल था, जो PSF हैदराबाद में है, उसका नाम वहाँ बेंगलुरु में कुरान स्टडी सर्कल। और ये कुरान स्टडी सर्कल बेंगलुरु में कायम हुआ था 1986-87 में। बहुत से लोगों को पता ही नहीं। डॉक्टर बेलगामी ने शुरू किया था काजी साहब, जब मतीन साहब नहीं थे, उस ज़माने में वो अमेरिका में थे। तो बेलगामी साहब के साथ मैं भी कभी कभी जाता था जब मैं स्टूडेंट था। तो वो 8-10 लोगों को जमा करके कुरान स्टडी सर्कल चलाते थे। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि उसके बाद कुरान स्टडी सर्कल जिसमें सिर्फ प्रोफेशनल्स होते हैं, उसको वहाँ स्ट्रेंथन किया गया बेंगलुरु में। फिर उनके ज़रिए से कुछ लोगों ने आगे बढ़कर एक स्कूल शुरू किया ILM के नाम से। एक ग्रुप ने एक झोंपड़पट्टी के इलाके में माइक्रो फाइनेंस का प्रोजेक्ट शुरू किया, और माशाल्लाह उस माइक्रो फाइनेंस के नतीजे में उस पूरे इलाके के अंदर औरतों के अंदर तब्दीली आ गई। हाइजीन सबसे इम्पॉर्टेंट रखा। उसके बाद ये है कि सब बच्चों की मारपीट नहीं होगी, बच्चों को स्कूल में दाखिला दिया जाएगा। लोन उनको देते थे, उस लोन के ज़रिए से छोटी छोटी तिजारत वो करती थी। उसके नतीजे में उस पूरे इलाके के अंदर एक अवेकनिंग आ गई, एक चेंज आ गया। यही प्रोफेशनल्स ने काम किया। कुछ प्रोफेशनल्स ये किया कि एक हॉस्पिटल है, डॉक्टर मतीन साहब ने बनाया, HBS हज़रत बिस्मिल्लाह शाह हॉस्पिटल, वो ट्रस्ट का नाम है वो।
तो वहाँ डायलिसिस सेंटर बनाया। तो इन्हीं प्रोफेशनल्स में से, रख दीजिए मुझे टाइम मालूम है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, अभी 10 मिनट है, ठीक है। तो उन्हीं में से कुछ लोगों ने डायलिसिस के लिए क्राउड फंडिंग करते हैं। मर्सी मिशन के नाम से कोविड-1 के ज़माने में सबसे टॉप मोस्ट कारकर्दगी प्रोफेशनल्स ने किया वो ये है कि मैयतों को उठाते थे हॉस्पिटल से मैयत उठाने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं, मजाल नहीं, लेकिन ये जो प्रोफेशनल्स थे इनका गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के साथ टाई अप था मर्सी मिशन का। मर्सी मिशन इज़ नथिंग बट प्रोफेशनल्स ग्रुप। तो मर्सी मिशन से जाकर लाशों को उठाते थे, फिर हिंदू के हो तो हिंदू के यहाँ पहुँचाते थे, क्रिश्चियन के हो तो क्रिश्चियन के कब्रस्तान में पहुँचाते थे, मुसलमानों की लाशें हो तो मुसलमानों के कब्रस्तान में पहुँचाते थे। इसी तरह मर्सी वैक्सीनेशन, मर्सी फलां, मर्सी किचन, जो यूपी बिहार के लोग लेबरर्स जा रहे थे उनके लिए रेलवे स्टेशन में किचन बनाया और रोज़ाना 4-5 हज़ार लोगों का खाना खिलाते थे और वहाँ के मिनिस्टर ने आकर उसका इनाग्रेशन किया। विप्रो ने फाइनेंसिंग भी की। तो प्रोफेशनल्स जो है अपना एक मिशन बनाते हैं, हालात की लिहाज से भी है और अपने ज़ौक़ के हिसाब से है। कोई इकोनॉमी के मैदान में करता है, कोई मेडिकल के मैदान में करता है, कोई एजुकेशन के मैदान में कर सकता है। पर्सनल मिशन उन्होंने टेकअप किया और एक एक बंदा एक एक काम शुरू करे। और यहाँ अगर 100 लोग मौजूद हों तो आइंदा 1 साल में पूना के अंदर 100 सोशल वेलफेयर के काम शुरू हो जाएंगे। रोना धोने का किस्सा ख़त्म हो जाएगा। बेहतरीन मॉडल पूना पेश करेगा कि देखो साहब प्रोफेशनल्स क्या होते हैं, जाकर देखो। 100 न्यू प्रोजेक्ट्स उनके पास चलते हैं, औरतें और मर्द सब मिलकर करते हैं। तो 1 साल के अंदर आप एक नया मॉडल पुणे का पेश कर सकते हैं। दुनिया के लोग आकर देखें कि पढ़े लिखे लोग इंसानियत के लिए, मुल्क की जीडीपी के लिए, मुल्क के अंदर जो है कौमों के दरमियान इत्तिहाद और प्यार मोहब्बत पैदा करने के लिए क्या क्या काम नौजवान कर सकते हैं। यू आर गोइंग टू बी ए रोल मॉडल फॉर ऑल अदर बिग सिटीज़ इंशाअल्लाह। Yes or no? Yes. तो वैसे मेरा टाइम तो और 10 मिनट है, लेकिन आप लोग थक गए हो तो इसको छोड़ देते हैं, इस स्लाइड को, इसके बगैर भी चल जाएगा काम, ठीक है। इस पर ख़त्म करें, कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। एक और स्लाइड भी है लेकिन वो फिर कभी बाद में देते हैं इंशाअल्लाह। एनी क्वेश्चन? तो ख़त्म कर लें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थोड़ा जगह, थोड़ी जगह। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are still alive, ready for the lunch. First of all, I think I was amazed, I was surprised, I was enlightened. So much of collective intellectuals sitting out here who are expressive, at the same time who gave their experiences. So, तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ, and of course I think many of us should be probably having the same feeling as well. It's good that we are part of this convention which is happening in Pune for the first time, and inshallah हम सब दुआ करेंगे ज़ोर की नमाज में कि ऐसे conventions और आए आने वाले दिनों में, and we all should participate on this. I mean, few of us got the opportunity to come here and speak and share our knowledge and experience, but I'm sure there are so many other people and individuals who have similar experience, who have diverse experience, who have diverse knowledge, can also be speakers, can also share their thoughts as well. So
I'll just take few seconds to talk about similar thing what we are trying to do at Islamic Information Center IIC पारगे नगर कोंडवा में जो हम कर रहे हैं. तो हमने जो IT हब बनाया इसी मकसद से बनाया क्या we have people from diverse background coming and staying together in the same locality, and there are a lot of people who are migrated for studies. We talked about professionals. There are so many individuals who are coming and staying in hostels here. They are doing their educations. So the platform that we have done in ISA is similar to the same thing, that we all come together, share our experiences. In a way, if we can inspire the youth, if we can inspire the professionals, as we heard from all the dignitaries and all the respected individuals, I got inspired a lot, and I'm pretty sure others would have also got through that part. So please continue this journey, have that desire, have that passion. This will help us, and more importantly, it will help our offsprings. अपनी जो आने वाली generation है, they'll look up to us, and then hopefully, inshallah, as Ameenul Hasan साहब said, एक मिशन हम ले सकते हैं, और एक मिशन को अगर लेके हम सब लोग करेंगे, अभी हम ये इधर ही यहाँ पे ऑलमोस्ट 60-70 लोग हैं, एक मिशन अगर उठा लेते हैं अपने जो कंट्रोल में, अपने जो लिमिट में है, अपने जो नेबरहुड में, अगर हम एक भी अगर मसला उठा के काम करना स्टार्ट कर दिए, automatically it helps reducing and avoiding the negativity, avoiding the kind of bubble that तजम्मुल बता रहे थे, जो हवा बना दिया है क्या मुसलमानों के अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें हो रही है. I think we have to get up ourselves and then start working towards that. That's the few words that I would like to share. Thanks a lot for your patient listening. Thanks for turning out in huge numbers. I think this speaks for itself, and thanks for all the speakers to spending their time and valuable information. Jazakallah khair.